it was submitted in the FIR, it is mentioned it was submitted at the United Christian Hospital, which is commonly known as American Hospital. Deceased in this case was the real father of Mr. Ahmad Raza Kasuri, Nawab Muhammad Ahmad Khan. And sir, his post-mortem report reveals that he had 2 firearm injuries on the head. One is entry, other is exit, and 2 abrasion, very small abrasion, one on the right arch, other on the left forearm, but none was injured in this incident. The case was registered at police station Ichra on the same night at 3:45 a.m. FIR number I have mentioned, this is 402. It was registered under section 307 and 302 PPC. Sir, investigation started. May I ask how far is Ichra police station from the place of incident? Hardly 2-3 kilometers, hardly. It is the closest police station? Yes. Okay. It was within the jurisdiction of PS Ichra, therefore the case was registered, though his statement was recorded by a sub-inspector of a different police station. It was recorded by a sub-inspector who was attached with police station Gulbagh, Lahore, but this place falls within the jurisdiction of PS Ichra, therefore the case was registered there. It was 2-3 kilometers from the place of occurrence. So why 307 was inserted? So this was firing. They had the intention to kill a person, but even if he did not receive injury, 307 is detected. It is now 324. Now it is 324. At that time it was 307. 307. Yes. So this investigation started on the same night by the SHO Ichra, Abdul Hayy Sub-Inspector, and investigation remained with the police station till 14th of December 1974. Thereafter, it was transferred to CIA Lahore by the order of then SSP Lahore, and I will make the detailed submission how it was transferred and where it is mentioned. And so the next important point, the most important point in this case, close of investigation. On 1st of October 1975, a report was prepared within the provision of rule number 25/57 of Police Rules 1934 on the form that is 25.57 within bracket 2 of the same rules by Abdul Hamid, Inspector CIA Lahore. This report was signed by the DSP Ichra Circle, then SP Kent, and then finally it was approved by the magistrate. Before we go forward, the FIR, what was who was accused in that FIR? FIR, nobody was accused. What was the written application of Ahmad Raza Kasuri? Sir, I'm just giving you the brief summary. I will make the detailed submission on every aspect of the case, but I'm just giving you the brief summary of what the prosecution case was. Then the report was finally submitted to the magistrate, and he passed an order on that report. I agree with the police report. That is in Urdu. I will read that. That is available on the record. Then, sir, police report regarding closing of the case? Yes. Closing of the investigation, because they mentioned that we have not been able to trace the culprit. And then there's... Or do they use the word untraced or not traced? We could not trace the culprits. Untraced or could not trace, same meaning. But I will read that as well. I will read, because I'm just giving you the summary of the thing. Then, sir, that order of the magistrate. Police rules दीजिए. Police. If you don't mind, जरा सा आप notes कर ले. We will certainly hear Sir, you. I will make it clear, Bhutto was not named and is accused. We will read there it. was just a mention that he uttered such and such words. Please, sir, I will not make any incorrect statement. Ignore that. No, it was very respectable for me. No, we will read it, whatever the document says, it will say. Whatever I say, is that FIR available on the record? Yes, I will refer. I will refer to the
yeah, now please, I am just giving- Ek second. On behalf of the learned amicus, we have appointed him to assist the court. He is not a party in this case. If the learned amicus has its human error, he may have made a mistake. Please note it, and when your turn comes, you can respond to it. But let him continue, because if his chain of thought is broken, then we'll spend more time unnecessarily. So I would request all, please note your points, and when your turn comes, we'll certainly hear them. Sir, Ji, aap par chalein, no, sir, no problem. No Manzoor problem. sir. No problem. So then this investigation was closed. I will make detailed submission. I will be repeating this. Chalein, haan. Then, sir, there is an observation of the Supreme Court of Pakistan about this closure of investigation, and that is at page 9 of the majority judgment. The Honorable Supreme Court observed in October 1975, the case was filed as untraced by DSP Muhammad Waris after obtaining instructions from the provincial government through Inspector General of Police. So my respectful submission would be that this observation is not in accordance with the facts of the case, because the order was by the magistrate and not by the IG. Then, sir, the next important phase is the re-investigation. As per record of which is now available before your lordship, I will refer it subsequently. This re-investigation was started by FIA, Deputy Director FIA, his name is Abdul Khalid, he appeared as PW 41 on 24/7/1997, and on the same date Arshad Iqbal and Rana Ikhtar, who were subsequently declared accused, were examined, interrogated. Then the Zimni is there, I will refer that as well. 1977. 77. It is at page 3, sir. It is at page 3. However, So you are saying that after closure of the case, which was in 75, 75, 76. It was no, 75 tha. no, sir, 75 report was prepared. Magistrate order is in 76. So almost a year and a half afterwards, Yes. on whose order was सर मैं इसमें डिटेल सबमिशंस भी आऊंगा. मैं जस्ट आप लिखे ना, इस सिर्फ मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ. I'm just following your. ना बस इसमें सारी चीज है. ठीक. अब उसके बाद ये this investigation as per record which is available before this court started on 24th of July 1977, but surprisingly the record suggests that the record from the concerned police station was taken on 8th of August 1977. The investigation started before taking the record from the concerned police station. And then the more interesting point is that there is nothing on the record, no application to the magistrate for permission for re-investigation or for requesting for withdrawal of that order or to modify that order or to set aside that. No application was submitted to the magistrate. And most important, the important point is that there is no written order. This is the answer of the query your lordship has posed. No order, written order is on the file regarding re-investigation. No order. And their most important witness, I will refer when I will go Is this a legal requirement? Of course, sir. No, can you also, if you assist us on this point? Sir, I will. You will later. Okay, right. A specific question was asked from this investigating officer. He said, I was verbally directed by my officer to you conduct the investigation and there must be some order. We might be lying with that officer. So then it is a different story. Then, sir, incomplete challan was prepared on 11th of September 1977, submitted before the court of the learned magistrate on 12th of September 1977. And in the interim challan, there were 7 accused. Their names are mentioned at page 3 of my note.
Number 1, Zulfikar Ali Bhutto. Number 2, Sheikh Masood Ahmed. Number 3, Mia Muhammad Abbas. Number 4, Ghulam Hussain. Number 5, Ghulam Mustafa. 6, Arshad Iqbal. 7, Iftikhar Ahmed. Then the order of the magistrate, on the same day the magistrate passed an order on the incomplete challan, and the matter went to the court of session, and that order was also passed on the same date. I will refer to the order. And sir, complete challan was submitted on 18th of September 1977, wherein accused were 5. Masood Mahmood and Ghulam Hussain. Their names were excluded as they became approver in this case. Charge was framed on 11th of October 1977 under section 120B Pakistan Penal Code, 302 PPC read with section 109 and 301 PPC, and under section 307 read with section 109 PPC. The prosecution witnesses in total were 41, defense witnesses are 4, none from the side of Mr. Zulfikar Ali Bhutto, and he boycotted the court trial proceeding at a particular date that I will also mention. Then the judgment of the High Court is PLD 1978, Lahore 523. All were convicted under different provisions of law, but they all were sentenced to death. Then their appeal came to this court, and it was decided on 6th of February 1979, the reported judgment, PLD 1979, Supreme Court 53, 7-member bench. Initially it was 9-member bench. Yesterday your lordship has been informed as to how the 2 judges who were initially part of the bench, but they did not remain, one because of health, other because of retirement. So the 4 judges, they dismissed the appeal. Slightly they modified it to the extent of 301, to the extent of certain accused, but they dismissed the appeal and death sentence was maintained. But the 3 honorable judges, and they allowed the appeal to the extent of Zulfikar Ali Bhutto and Mia Abbas, but to the extent of remaining, their appeal was dismissed. So this is, in brief, is the prosecution case. And now, sir, if you can give one spare, if you have more copies, I would like to give it to the Attorney General and to... I have. Okay, fine. Please proceed, Ji. Sir, please. No, sir, I will read the FIR. Complainant वो भी दे दीजिए, कसूरी साहब को भी दीजिए. दे दी कसूरी साहब. ये ले लीजिए. Sir, the complaint which has been signed by Mr. Ahmad Raza Kasuri, you will find it at page 310 of volume 7. Page... They are referring to the original record now? Which volume? Which volume? Which is before your lordship. आपने दिया है? नहीं सर, नहीं, वो मैंने तो इसकी बेटर कॉपी आपको दे रहा हूँ, ये बेटर कॉपी दे रहा हूँ. But the file your lordship wanted to see where the original volume कौन सी? क्या? Volume कौन सी? कंप्लेंट की बुनियाद पे FIR है ना जी. FIR को इतनी क्लियर नहीं है, वही उसका वो अगर. Where is that? It is sir at page 310 volume 7. ये दे दो, ये दे दी. Volume 7. Volume 7. ये सर बड़ा ही इसको बड़े ही मैं I don't have the words to use किस तरह इसको 310. ये सर वो पढ़ लेना फिर इसमें नहीं है. है सर वॉल्यूम 7. वो वॉल्यूम गलत लिखा होता है ना जी. ये बड़ा रिकॉर्ड जो है ना इसको प्रॉपर्ली इन्होंने बनाया. उर्दू में जो लिखी है जी सर वही है.
कॉपी है FIR की इसमें नहीं कॉपी नहीं है सर, मैं आई एम रेफरिंग टू द एप्लीकेशन। ये उर्दू ये वाली, ये वाली बिल्कुल यही वाली। हाँ ये पढ़ लें जरा। मैं इसकी बेटर कॉपी दी है ना जी, मैं वो पढ़ूंगा। अच्छा अच्छा, आई हैव सप्लाइड द बेटर। 310 Your lordship have got this? 310 जी जी, we got it, शास्त्र में रखो जस्ट। but we don't have the better copy. 301. यार दोनों Have you given it now? यस सर यस, वो बेटर कॉपी दे दें हमें। दूसरी दे दो ये भी पढ़ी जा रही है। चलें सर। नहीं वो बड़ी जरूरी है, बेटर कॉपी आप देना। बेटर कॉपी लेजिबल कॉपी हम पढ़ सकते हैं, क्वाइट क्लियरली रिटन, आप पढ़ें, ये बहुत साफ साफ लिखा है इन्होंने। बेटर कॉपी आ गई है। बेटर कॉपी है सर, लेजिबल किधर है? वो जी भी है। अब किसी और यही है को ना दे जी, दें, यही सारा काम है। नहीं कर पा रही हैं तो किसी और को दे दें। एक आदमी उधर, आधे इनको दे दें, आधे इनको दे दें। हाँ 310 जी बता दें। थैंक यू। इसी में है, इसी में। पढ़ूं जनाब पढ़ूं। बस एक अगर आप बुरा ना माने, मुझे पसंद है लफ्ज लेजिबल कॉपी, बेटर से लगता है कि कोई इम्प्रूवमेंट आ गई होगी। अब वो यही हम यूज ये करते हैं, बट ठीक है आप इसको लेजिबल कह लें। जी बिस्मिल्लाह। हम ये हमारा जो प्रैक्टिस है उसमें हम हाँ वो आई नो, वो डेवलप हो चुका है, मगर हम उसको कोशिश कर रहे हैं। हाँ पढ़िए मूर्खा। जी बेटर कॉपी। एक सेकंड सर, वो जस्टिस शाह इज लुकिंग फॉर द कॉपी। जी प्लीज, आई एम। यू गॉट इट सर? जी वही चीज FIR में भी लिखी हुई है। जी बिल्कुल वही है, ये जस्ट फॉर योर कन्वीनियंस सर, इट इज फॉर योर कन्वीनियंस। ये पढ़ ले। जी सर। मोरखा 17/1/1972 को आज से कबल कसूर में मुझ पर बजरिया फायरिंग कातलाना हमला हुआ और मुझे गोलियां भी लगी, जिसका मुकदमा थाना शहर कसूर में दर्ज है। उसके बाद मोरखा 24/8/1974 को इस्लामाबाद मुझ पर खुदकार आला से हमला हुआ, जिसका मुकदमा भी थाना इस्लामाबाद में दर्ज है, जिनमें मुफस्सल हालात दर्ज है। परसों 9/11/1974 को मुझे मोहम्मद हनीफ इलेक्ट्रिशियन ट्यूबवेल मॉडल टाउन सोसाइटी ने बताया कि एक यौम कबल 4-5 आदमी मेरे घर का पता दरियाफ्त कर रहे थे और मेरी तलाश कर रहे थे। आज करीब 12:30 बजे रात मैं माँ, अपने वालिद नवाबजादा M.A. खान, मेरी वालदा और अपनी खाला मिसिज आगा मोहम्मद महजी अपनी कार नंबरी LEG 9495 पर सैयद बसीर हुसैन शाह की कोठी वाक़या शादमान कॉलोनी की शादी से फारग होकर कोठी से शाह जमाल की जानब जा रहे थे। मेरी कार दाएं हाथ ड्राइव है, जिसको मैं खुद चला रहा था। मेरे बाईं तरफ मेरा वालिद नवाबजादा M.A. खां, मेरे अकब में पिछली सीट पर मेरी वालदा और उनकी बाईं जानब पिछली सीट पर मेरी खाला बैठी थी। जब गोल चक्कर के करीब कार आई तो अचानक दाईं तरफ से मेरी गाड़ी पर फायरिंग शुरू हो गई, जो तकरीबन 100 गज तक मेरी गाड़ी पर फायरिंग हुई। चंद एक गोलियां मेरे वालिद को सर पर लगी, उनका काफी खून बहने लगा और कार दाईं तरफ से चलनी हो गई, जिसके शीशे टूट गए। मैं अपने वालिद को कार में सीधा अमेरिकन हॉस्पिटल UCH गुलबर्ग ले आया, जहां पर मेरे वालिद फायरिंग के जख्मों की ताब न लाकर जान बहक हो गए। ये फायरिंग खुद कार आला से की गई, जिसमें मेरे वालिद नवाबजादा M.A. खान कत्ल हो गए हैं। ये फायरिंग मुझ पर सियासी वजूहात की बिना पर कराई गई है, क्योंकि मैं कौमी असम्बली में हिज़्ब इख्तिलाफ का मेंबर हूँ और तहरीक इस्तिकलाल का, जो कि मुल्क की सियासत में हुकूमती पार्टी का डटकर मुकाबला कर रही है, मरकजी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हूँ और गवर्नमेंट पर कड़ी तनकीद करता हूँ। याद रहे कि जून 1974 में कौमी असम्बली में मिस्टर भुट्टो ने मुझे मुखातब करके कहा था कि मैं इस शख्स से तंग आ चुका हूँ, ये शख्स मेरी बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। ये अल्फाज कौमी असम्बली के रिकॉर्ड और अखबार बाद में मौजूद हैं। No sir, this FIR, as your lordship have seen, it has 3 parts. Number 1 is the background of the incident, where the complainant says that he was fired at in Kasur in 72, then Islamabad in 74. Number 2 is the narration of the events. Okay, how did this incident took place?
And number 3 is his assessment, his opinion, his guess or his version that why this firing was made and who is responsible for that. These are the 3 portions. So far as first portion is concerned, that doesn't need much comments at this stage, but I will touch it later on. So far as I think who in those 2 FIRs that you mentioned in the first part, yes. Is it on the record who was nominated there? I said I tried my best. I could not get copy, but from the record it emerges that Mr. Bhutto was not accused in both those FIR. He was not. There was unknown person? In so far as the FIR at Kasur is concerned, I believe there was some man group who was his political opponent, or within the party they were opposing each other. They were named in the second FIR, which was at Islamabad. None was Have named. you read Justice Shafiur Rahman's report? Yes, sir. मैं आ रहा हूँ सर, वो सारी Okay, ठीक है। पता है क्या फिर उसमें उन्हें जिक्र किया। सर मैं पढ़ दूंगा वो सारा, वो मेरे पास है। मैं चाहता हूँ जरा आप थोड़ा सा ओके ठीक है। चीजें आहिस्ता आहिस्ता सबकी बात क्लियर होती जाए कि है क्या केस। वो मेरे पास है, मैं जब भी कहेंगे तो अभी पढ़ देता हूँ, मगर वो फिर सीक्वेंस टूट जाएगा। Now I am referring to the second part of this FIR. And I will very fairly, I will say, this is the very good narration of the events, so far as events are concerned. Your Lordship might have come across many FIR, and particularly in Punjab, we specifically attribute injuries even at night time. A fire hit in the head, B fire hit on the left leg, C fired hit in the chest. So this is the routine FIR, but in this FIR, very natural relations of the which has been described, and this has not been disputed anywhere. The fact that this incident took place at Shadman Chowk has not been disputed. The fact that car was being driven by Kasuri Saab has not been disputed. The fact that in car his father, his mother and Khala were sitting has not been disputed. That his car was fired at has not been disputed. Fact that his father received the firearm injury, it has not been disputed. The only thing is that he says he received a number of bullet injuries. Either there is only one. Did any of the other occupants receive any? No, none. But sir, even I will give this allowance to him, because at that time when your father is hit and you are narrating the events, so he could not see how many injuries on his head. Obviously blood was oozing, so that is not much important. If he said he received injuries and there is only one injury, I think this is not important point of the case. अगर इसी ग्राउंड पे आप बेल देते थे पता नहीं मैं क्या करता। नहीं, और दूसरा प्लीज प्रोसीड जी। अब इसकी एक और एस्पेक्ट देखिए। In this FIR, so far as firing is concerned, none is named. As my lord was asking the question who was named in the FIR, none is named in the file. What weapon was used, it has not been described. How many fires were shot, it has not been mentioned. So these are the salient feature of this FIR, but I will call it, again I will say, it's a very natural narration of the event, which is expected from a person who is in such a situation. So It is based on the suspicion that whatever he said in the National Assembly. No, that is the subsequent. He said what he said in the National Assembly. He just gave an incident of the National Assembly. He has not referred to any conspiracy. No direct allegation. No allegation. But I don't want to much time spend on this aspect of the matter, because it's not that relevant and that material. And even in my assessment, the whole evidence of Kasuri Saab is not relevant. मगर धमकी तो इनको दी कि इनको ये मुझे पसंद नहीं है। नहीं, वो बात तो ये ना कि हमने तो ये देखना है जनाब। तो बात है FIR में ऐसा लगता है। मैं आज करने लगा हूँ। नहीं, आप बात सुन लीजिए। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि अटैक इन पे होना था। इन्होंने लिखा है मैं लेफ्ट हैंड ड्राइव कार थी।
نہیں رائٹ ہینڈ لکھا ہے, رائٹ ہینڈ لکھا ہے, لیفٹ نہیں لکھا. وہ اٹیک رات کو 12 بجے جناب, وہ پھر لیفٹ رائٹ کا نہیں پتہ چلتا. اور دس واز 74, کوئی اسٹریٹ لائٹ کا بھی اتنا کانسیپٹ نہیں ہے, وہ ایسا ایشو نہیں ہے. میں کیونکہ مائی لارڈ ہے سیٹ کہ جی ٹائم کا مسئلہ ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کا جو وقت ہے نا جی اس کو ہم بعد میں ڈیل کر لیں گے. پھر وہ انویسٹیگیشن میں نے بتا دیا. اب وہ اگر آپ چاہتے ہیں تو میں آپ کو پیج بھی بتا دیتا ہوں. یہ پیج ہے 39, پولیس فائل نمبر 6 آپ کے پاس ہے جی. اور ایک تو پولیس فائل ہے نا جی جو ہاتھ سے لکھی ہے, یہ بیٹر کاپی ہے. نکالو پیج, پیج 39. یہ چلان ہے؟ نہیں سر, یہ وہ چینج آف انویسٹیگیشن کی میں بات کر رہا ہوں. پہلے میں نے کہا نا جی کہ پولیس انویسٹیگیشن لوکل پولیس کرتی رہی, پھر اس کے بعد یہ CIA کو ٹرانسفر ہو گئی. مل گیا جناب کو پیج ہے, پڑھوں میں؟ نہیں ضرورت ہے, آپ کو پتہ نہیں پڑھنا چاہتے تو ٹھیک ہے. نہیں میرا مطلب آپ نے کہہ دیا تو ٹھیک ہے. اس میں صرف یہ ہے, میں خاص بات ہے تو بتا دیں. میں صرف یہ عرض کرنے لگا ہوں کہ اس میں یہ لکھا ہے کہ یہ آرڈر فلاں کے تحت یہ CIA کو ٹرانسفر ہوگی. اگر جناب نے پڑھ لیا تو ٹھیک ہے, میں نہیں پڑھتا. ٹھیک ہے. بیسیکلی آپ چالان پڑھنا چاہتے ہیں, اگر چالان, وہ چالان سے پہلے میری گزارش یہ ہے, اب بڑا ہی امپورٹنٹ پوائنٹ میں جناب کو بتانے لگا ہوں کہ یہ کلوز کیسے ہوئی, کس کے آرڈر سے ہوئی, اور کس طرح ری انویسٹیگیشن ہوئی. اٹس اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ اینڈ یور لارڈشپ ہیز فریزڈ اے کوسچن کہ in what circumstances this investigation, re-investigation started. This is a very important point. I need your kind indulgence on this point. It's a very, very important point. No, sir, your lordship kindly see this close of investigation, closure report prepared under Rule 25.5557. 25.57 and under Police Rules 1934. The form is 25.572 and it was prepared by Abdul Hamid, and that is available on page 105 of this file number 6, the same file. جی مل گیا سر؟ مل گیا. یہ پڑھوں سر؟ 105 یہ تو مجھے FIR نظر آ رہی ہے. نہیں سر, نہیں FIR نہیں ہے. فارم رپورٹ خاتمہ زیر دفعہ 173. وہ 173 میں یہ رپورٹ وہی بنتی ہے. بیسیکلی رول اس کا ڈفرینٹ ہے, مگر اس کی باڈی میں وہ ساری باتیں لکھی ہیں جو میں کہہ رہا ہوں. ٹھیک, اگر اجازت دے تو میں پڑھ لوں اس کو. اگر آپ سمجھتے ہیں پڑھنا چاہیے. بڑا ضروری ہے. پڑھیے. اس میں نہیں ملے گا سر, یہ پولیس رولز ڈفرینٹ ہیں. دونوں ہم دیکھیں, میں دونوں باتیں. 173 ہے رپورٹ انویسٹیگیشن کی. وہ کلوئر رپورٹ کے لیے ایک پرٹیکولر سیکشن ہے. آپ کی آنکھیں بہت تیز ہیں, میں سمجھا آپ دیکھ نہیں سکتے ہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں. جی آئیے سر, اس کو پڑھ لیتے ہیں. یہ میں ریلیونٹ پڑھوں گا سر. جی, پہلا تو یہ ہے نا, یہ جو پہلا پیرا یہ میں نہیں پڑھتا کیونکہ یہ سارا FIR ہے. اب میں سیکنڈ پڑھنا چاہوں گا. ہر پہلو پر تفتیش ہوتی رہی. آج تک کی تفتیش سے مقدمہ حاضہ میں کوئی سراغ ملزمان نہ ملا ہے. مقدمہ حاضہ میں اب تک کوئی ملزم گرفتار نہ ہوا ہے. مقدمہ حاضہ کافی درینا ہو چکا ہے. درینا مطلب سر پرانا, I believe it's a Persian words. درینا ہو چکا ہے, جس میں سراغ براری کا کوئی فی الحال امکان نہ ہے. مقدمہ کو مزید زیر تفتیش رکھنا محض بے سود اور توسیع الوقتی ہے. لہذا مقدمہ حاضہ میں رپورٹ قائمہ بصیغہ عدم پتہ, یہ ہے جناب وہ جو بصیغہ عدم پتہ, نو کلو نو ٹریس, مرتب کر کے بمراز سماعت ارسال ہے. بعد ملازہ مصر مقدمہ حاضہ کو عدم پتہ داخل دفتر فرمائے جانے کا حکم تحریر کیا جائے. یہ تفصیل لکھی ہے سر. اور اس کے بعد یہ آپ کے لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ
ये इसके मकसद हैं DSP के, اور اس کے نیچے ایس پی. उसके नीचे SP के हैं 24/4/76 को, और फिर बिल्कुल नीचे आप देखेंगे तो मैजिस्ट्रेट साहब का ऑर्डर है. ये 9/5. नहीं सर नहीं, یہ کس کا ہے؟ 9/5 کس کا ہے؟ یہ اندراج شدہ ہے جی, یہ تو اچھا اندراج شدہ. انڈورسمنٹ ہے. ہاں 3/5. 3/5 اور اس کے اوپر میجسٹریٹ صاحب لکھتے ہیں حسب استدعا پولیس مقدمہ بسیگا عدم پتہ داخل دفتر ہوئے. دس از ویری امپورٹنٹ. سو دس انویسٹیگیشن واز کلوزڈ بائی دا آرڈر آف دا میجسٹریٹ. دا پولیس جسٹ ریکمینڈیڈ. یہ جو ہر پہلو کا لفظ لکھا گیا اس طرح رائٹ, ہر پہلو سے مراد وہ جو کانسپیریسی وغیرہ تمام شامل Everything. ہر پہلو, they said we have seen every aspect of the case from different angles. No clue could be located. Yes, this was their opinion at that time. But the point which I want to impress is that this was the order of the magistrate. The police just prepared the report, and as required under the rules, it went to the magistrate after it was signed by the DSP and SP. And then magistrate passed the order. This is a very important point. This order was challenged anywhere? No. Order یہ آرڈر آج تک انٹیکٹ پڑا ہوا ہے. جی بالکل انٹیکٹ ہے. انٹیکٹ پڑا ہوا ہے. اور اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ری انویسٹیگیشن جو ہے وہ بائسنس ظاہر کرتی ہے وداؤٹ بینگ سیٹسفائڈ دی آرڈر آف دی میجسٹریٹ. سے بھی اگلی چیز پہ وہ چلی جاتی ہے. اب باعث کا تو اردو ترجمہ مجھے نہیں پتا, مگر اگر آپ مجھے اردو میں پوچھیں گے تو یہ بددیانتی ظاہر کرتی ہے. باعث تو بڑا سیولائز سا ورڈ ہے نا جی. بدنیتی. نیتی. بدنیتی نہیں, باعث اور چیز ہے. اب آئی ڈونٹ نو دا اپروپریٹ ورڈ ان اردو. تعصب, یس, وہ تعصب ہے. باعث تعصب ہے. دس از ناٹ باعث, دس از بددیانتی. یہ ایسپیکٹ کو ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ نے کنسیڈر کیا یا نہیں؟ نو, میں نے آپ کو آبزرویشن, کیونکہ اتنی لمبی ججمنٹ ہمیں نہیں پتا. سر وہی تو میں عرض کر رہا تھا کہ سپریم کورٹ کی تو میں نے آبزرویشن آپ کو پڑھ دی اس پوائنٹ پہ کہ انہوں نے کہا کہ یہ کلوز کیا گیا اور اس کے بعد یہ FIA نے انویسٹیگیشن شروع کر دی. دیٹس آل. کو پڑھ لیجیے گا. لیکن میجسٹریٹ کے آرڈر کا تذکرہ نہیں کیا. نو. لیکن آپ کے خیال میں جب یہ چالان آیا تو وہ تو میجسٹریٹ نے اس کو انڈورس کیا, تو ڈونٹ یو تھنک اٹ واز این امپلائڈ نو سر, چالان تو ایک سبسیکوینٹ سٹیج ہے نا, اس کی تو ریکوائرمنٹ ہی ڈفرینٹ ہے. انڈورس نہیں کیا اس نے. آپ سے اس کی بات کر رہے ہیں, سپورٹ کی. آپ دیکھیں نا, یہ آپ پیج 4 پہ آ جائیں نا. نہیں 4 اس کو چھوڑے سر. ہاں, آپ ایک چیز ہے, آپ کی بات درست ہے کہ اگر میجسٹریٹ نے ایک چیز کو کلوز کیا ہے تو اس آرڈر کو ان نے it had to be set aside یا it had to be recalled. Yes. That wasn't done. صحیح. یہ کہا جا سکتا ہے جس سے ہم آپ کی اس میں ہم وہ مانگ رہے ہیں اسسٹنس کے, ٹھیک ہے there was no recall of that order, but what about جب چالان دوبارہ سے آیا اور وہ آگے جائے گا کمپٹنٹ کورٹ کے پاس, میجسٹریٹ سیشنز کو بھیجے گا, تو اس نے وہ چیز دیکھا, will that not compliance تو نہیں ہوئی پھر. No sir, no. Magistrate can't do anything to a case which is exclusively triable by the court of session. He cannot pass any order except that this file be sent to the court of session. Yes. This is for the session court, and from session court this case went to the high court. That stage will come later on. For the time being, my submission is that this reinvestigation, I will go further how it started. I will show you the documents. This order was not challenged. There is no mention of this order either in the judgment of the high court or the supreme court. There's nothing. ملک صاحب, اس میں FIR داخل دفتر کنسائن ٹو ریکارڈ ہوا ہے, کینسل نہیں ہوئی ہے FIR. میں یہی عرض کر رہا ہوں, سی میں گئی نہ سی میں گئی. نہیں بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں.
اور دوسرا ایک چیز یہ پھر فرمائیے گا کہ اس میں پھر ری انویسٹیگیشن کا کوئی آرڈر ہوا تو میں یہی تو عرض کر رہا ہوں نا جی کہ ری انویسٹیگیشن پہ تو ابھی ہم آ رہے ہیں. پہلے تو یہ پوائنٹ کلیئر کر لوں میں کہ یہ آرڈر کیا کس نے کلوجر کا؟ میجسٹریٹ. اب اس کو ری اوپن کرنے کے لیے اٹ از کوشچن آف کامن سینس کہ یو ول گو ٹو دا میجسٹریٹ صاحب, وی ہیو دس فریش ایویڈینس اینڈ کائنڈلی گرانٹ. We got the point. Next point. صاحب ان کو بھی تو جواب دینا ہے اگر اجازت دے. میں آپ سے یہ پوچھ رہا تھا کہ ایف آئی آر کینسل تو نہیں ہوئی تھی؟ بالکل نہیں ہوئی. ری انویسٹیگیشن کا آرڈر ہونا ہو سکتا ہے. ری انویسٹیگیشن واز permissible but of course under the provision of law you have to follow a procedure for With the permission of the magistrate. Yes, quite right. This is what you are. Quite right. As my Lord Justice Yahya was asking, the magistrate at the time of submission of challan is not required to examine them. نہیں یہ سب کا مقصد یہ تھا کہ جو سبسیکوینٹلی الٹیمیٹلی چلان جب آیا, اسی کی بات کر اگر اس وقت جب چلان آیا تو جب وہ آٹومیٹکلی سیشن کورٹ میں چلا گیا, اٹ ڈزنٹ اماؤنٹ ٹو انڈورس دی سیکنڈ انویسٹیگیشن. Not at all. اس میں تو یہ چالان جب آیا میجسٹریٹ یہ تو کچھ وہ کرے گا نا جب آپ سر یہ تو سچویشن آئے گی نا کہ اگر آپ ملزم کو بلاتے ہیں تو وہ یہ پوائنٹ ریز کرے گا نا, میجسٹریٹ کو کہاں سے پتہ چلے گا؟ ان لوگوں نے دیکھا ہی نہیں اس کو. نہیں انہوں نے تو دیکھا نہیں, ملزمان تو تھے نہیں میجسٹریٹ کے پاس. اینڈ ایون دے ڈڈ ناٹ گو ٹو دا سیشنز کورٹ. یہ تو اب اگلی اسٹیج آئے گی, پہلے میں خیر اس کو ذرا ڈسکس کر رہا ہوں. آئی ایم کلیئر ناؤ سر؟ جی جی تھینک یو. Then sir, how this re-investigation started? وہ میں نے آبزرویشن آپ کو بتا دی. پی ایل ڈی 1979 سپریم کورٹ 53 پیرا 9 پیج 61 پہ آبزرویشن ہے کہ how this was closed and how the re-investigation started. Your Lordship may read it. اب ٹائم کا پرابلم ہے جناب, میں اب اگر کہتے ہیں تو پڑھ دیتا ہوں. اس پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں انہوں نے مجسٹریٹ کا ذکر ہی نہیں کیا. نہیں ان کو بالکل نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ یہ کلوز کی ہے ڈی ایس پی نے آفٹر گیٹنگ اپروول فرام دیئر پولیس ہائرارکی, آئی جی, ڈی آئی جی, whatsoever it is. Would the complainant know that the investigation has been closed? I don't know, sir. I don't know. And Malik Saab, on who's saying this and re-investigated started? Sir, please, I'm now submitting, I'm coming to that point. I'm coming to, it's a very important question my Lord has asked, but now I am moving towards that. نہیں ٹھیک ہے وہی جی. اب سر وہ ایشو بھی ہے ٹریبیونل والا, بٹ دیٹ آئی ول ڈیل سبسیکوینٹلی. وہ جو ٹریبیونل میں جناب نے کہا شفیع الرحمان صاحب کا ٹریبیونل ہے, اس میں بھی میں نے نوٹ کیا ہوا ہے جس میں قصوری صاحب نے کہا کہ یہ میرا نام لکھانے کا مقصد یہ بالکل نہیں تھا کہ وہ بھٹو صاحب خود ہیں, ہو سکتا ہے کوئی ان کی بات سن کے کوئی دوسرے نے کر دیا ہو. یہ ان کا بیان ہے اس ٹریبیونل. اب وہ بٹ میں ابھی اگر کروں گا تو یہ سیکوینس آپ چلیں جیسے آپ کریں, وہ میں نے ویسے کلیئر کر دیا آپ کو کہ وہ وہاں جو ٹریبیونل میں بات کیا ہے. ناؤ سر وی آر کمنگ ٹو ری انویسٹیگیشن. Now, if your Lordship kindly look, file number 21, Zimni number 96. 21 یہ بھی ہے. 21 بھی ہے سر, 3 ہیں بہت بڑی بڑی, اور اس کا ایک تو اوریجنل تھی, پھر اس کی یہ کاپی, پھر میں اس کو کہوں گا والیوم 21 نکالیں. یہ ہے فائل 21. تھینک یو جی. اس کا بھی اب وہ پہلے اس کا 21 پیج, اس کا پیج ہے سر 1. ضمنی نمبر کیا بتایا ملک؟ ضمنی نمبر سر 96. ٹاپ پہ آپ کے لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ جہاں ضلع لاہور لکھا ہے نا, اس کے نیچے لکھا ہوا ہے رپورٹ ضمنی 96. والیوم 21 کا ہے بھائی. بڑی مشکل سے سر یہ ریکارڈ آئی ول سے کہ اٹس ناٹ پراپرلی بین ارینج, اور اس کا مارکنگ اور نمبرنگ بھی بڑی, کوئی فائل کدھر ہے کوئی کدھر ہے, بہت ٹائم لگا. نمبر یہ کیوں پڑے میں 22 ہے اردو میں. دوسرا بتاؤ بتاؤ کون سی فائل, کون سا پیج ہے منصور سر؟ پیج 1. یہ آپ کے پاس کون سی فائل ہے جناب؟ فائل نمبر 21. یہ اس کا پہلا پیج. یہ 4-5 پیج ہیں جو انڈیکس ہے, اس کے آگے جو فرسٹ پیج ہے نا بیٹا یہ دکھاؤ. بہتر کاپی کس چیز کی ہے؟ ضمنی کی. جی سر یہ میں آپ کو کلیئر کر دوں ٹھیک ہے کہ
یہ ہوا یہ کہ یہ جو ضمنیاں لکھی جاتی ہیں مائی لارڈ نوز اٹ ویل یہ ہاتھ سے لکھی جاتی ہیں یہ ساری فائلیں ہاتھ سے لکھی ہوئی ہیں مگر شاید جناب کی اسسٹنس کے لیے کسی نے اس کی کاپیاں کر کے بھیج دی بٹ میں نے ویریفائی کیا جو میں بات کر رہا ہوں وہ میں نے ہاتھ کی لکھی ہوئی میں بھی پڑھی ہے اگر جناب حکم کریں گے تو میں وہ بھی ریفر کر دوں گا نہیں آپ کہہ رہے ہیں اسی کے مطابق ہمیں پورا تسلی ہے فائل 21 کا پیج کیا آپ نے؟ 1 سر 1 آپ کے پہلے 3-4 پیج چھوڑ دینا سر وہ انڈیکس ہے یہ انڈیکس کے 3 پیجز ہیں یہ چھوڑ دیں اس میں ساری وہ ڈیٹیل ہے اس میں کیا دکھانا چاہ رہے ہیں آپ ہمیں سر میں پڑھنا چاہوں گا اس پڑھیے یہ دوبارہ انویسٹیگیشن سٹارٹ کیسے جی ہاں ویری رائٹ ایز مائی لارڈ جسٹس مدر واز آسکنگ سر this they are now talking and madam this is how it started I will now come to the or whether there was order or not that is just something else ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ who is competent to pass order for سر reinvestigation پہلے ایک تو گل کر چلیے مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے I always love the questions and I am ready to answer every question but the problem is as of my lord has said نہیں آپ چلیں آپ اپنے طریقے سے چلیں نہیں میں آپ کے طریقے سے چلوں گا نہیں ہم بعد میں سوال پوچھیں گے چلیں آپ چلیے جناب میں اس کو پڑھتا ہوں یہ آپ اپنے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ دیکھیے 24/7/1977 اور اس کے ٹاپ پہ لکھا ہے مرتبہ عبد الخالق DD مرتبہ کا مطلب ہے کہ who prepared it again it is a Persian word مرتبہ اب یہ لکھتے ہیں جناب علی رپورٹ ضمنی نمبر 95 یہ پچھلی کا حوالہ دے رہے ہیں مورخہ 1/10/75 تحریر ہے حسب احکام مرکزی حکومت FSF کی کارروائیوں کے بارے میں انکوائری شروع ہے یہ انکوائری ہائے مورخہ 13/7/1977 سے جاری ہے FSF کا ریکارڈ ملاحظہ کیا جا رہا ہے اور متعلقہ اشخاص و ملازمین FIA سے خفیہ دریافت جاری ہے اس دوران میں FSF کے خلاف عوام کی شکایت بھی زیر دریافت ہے نواب محمد احمد خان کا قتل بھی خفیہ طور پر زیر دریافت تھا اور لاہور ریلوے اسٹیشن لاہور پر مارچ 1975 میں جو بم کا واقعہ ہوا تھا اس کو بھی دیکھا گیا ہے جس کی ایک سٹیج پر ٹریبیونل نے یہ ریمارک دیا تھا کہ تفتیش اچھے پیرائی میں نہ ہوئی ہے ریلوے اسٹیشن والے کیس کی دریافت کے سلسلے میں یہ مخبری ہوئی کہ اغلب گمان ہے غالب یس غالب کیا اس کو انگلش میں کیا کہیں گے سمجھ گیا سر اگمان ہے کہ نواب محمد احمد خان کا قتل بھی شاید FSF کی کارروائیوں کا نتیجہ ہے اس شک کو مزید تقویت اس بنا پر پہنچی کہ جائے وقوع سے گولی بارود کے جو خول قبضہ میں لیے گئے تھے اس کا بور ایمونیشن FSF کے پاس زیر استعمال ہے یہ غیر مصدقہ مخبری ہوئی کہ انسپیکٹر غلام حسین ASI اور افتخار FIA اسلام آباد اور افسران انچارج دریافت ہائے وزارت داخلہ سے بات کی لائن چھوڑ گیا جی اور ان کے اب میں وہ جو ہے اس پریشر میں ہونا جی کہ مجھے جلدی کرنی نہیں وہی امپورٹنٹ اور ان کے دیگر ساتھی اس قتل کے ذمہ داری ہے یہ اطلاع ڈائریکٹر صاحب FIA سینٹرل زون کو دی گئی جنہوں نے ڈائریکٹر جنرل صاحب FIA اسلام آباد اور افسران انچارج دریافت ہائے وزارت داخلہ سے بات کی جنہوں نے باقاعدہ حکم دیا اب یہ امپورٹنٹ ہے جنہوں نے باقاعدہ حکم دیا کہ مقدمہ حاضہ جو عدم پتہ ارسال ہو چکا ہے اس کی تفتیش FIA اپنے ہاتھ میں فوری طور پر لے یہ حکم مجھ تک بوساطت جناب ڈائریکٹر صاحب FIA سینٹرل زون پہنچا جس پر میں نے مثل تھانہ اچھرا سے حاصل کی دس از ویری امپورٹنٹ He claims that this file was taken by him from police station Ichra, obviously before writing of this Zimni. This he is writing on 24th of July 1977. حاصل کی جس کی تریری اطلاع نوٹ کی شکل میں DSP اچھرا کو کر دی کل اس قسم کی اطلاع چٹھی DIG صاحب کو دی جائے گی اب جناب
یہ تو ہو گیا اس کا کلیم. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ فائل اس پولیس اسٹیشن سے کیسے لی گئی. ایک اس پوائنٹ میں کہاں ہے ملک صاحب ایک بات اس میں کہ یہ جو مخبر کی اطلاع تھی کہ کوئی ان رائٹنگ کوئی چیز ہے کہ مخبر کی اطلاع کو کہیں پہ ریکارڈ کیا ہو؟ نہیں وہ یہ پروٹیکٹڈ ہے ایویڈنس ایکٹ میں کہ آپ پولیس کو نہیں پوچھ سکتے کہ آپ کو جرم کی اطلاع کہاں سے ملی. And there is a wisdom behind that. انفارمیشن نہیں ہوتی. نہیں وہ ہو نہیں سکتی صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ جو مخبر نے بیان کیا اس بیان کو کہیں پہ رائٹنگ میں کسی ریکارڈ پر آیا کہ یہ ہوا ہے. یہی ہے جو میں نے پڑھ دی. مگر یہ تو کچھ اور کہہ رہے ہیں کہ کہہ رہے ہیں یہ اطلاع ڈائریکٹر صاحب ایف آئی سینٹرل زون کو دی گئی. انہوں نے دی نا مخبری کی اطلاع. نہیں ابھی سوال نہیں آیا. ہاں سوال یہ ہے کہ ڈائریکٹر جو تھے ایف آئی اے کے ان کا کوئی بیان ہے؟ وہ گواہ بھی نہیں نہ ان کا کوئی بیان. وہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے مخبر نے دی, مگر یہ تو پھر مخبر تو چھوڑیں وہ تو ٹھیک ہے آپ کی بات, مگر یہاں تو انہوں نے بیان کر دیا کہ یہ بیان ڈائریکٹر ایف آئی نے مجھے دیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. کم از کم ڈائریکٹر ایف آئی سے تو پوچھ لو کہ بھائی یہ بات. میں آئی ول ریسپیکٹفلی سبمٹ سر دس از ناٹ دیٹ امپورٹنٹ. دس از ناٹ امپورٹنٹ. امپورٹنٹ پوائنٹ از when they started the investigation. And then two other questions. Number one, when did they get a record from the police station of the investigation which was closed? And number next, who ordered for the reinvestigation? And there's a related question. Yes. How did it go from police to FIA? تو یہ اگلا کوشچن ہے جی. وہ تو اب میں اسی لیے چاہ رہا ہوں کہ میں تھوڑا سا اس کو ذرا پوائنٹ کو کلیئر کر دوں. اب جناب میں اگین آئی ول ریفر ٹو فائل نمبر 6 آف دا پولیس فائل, پیج 108. جی. اب یہ بھی میں اگر اجازت دیں تو پڑھوں گا. جی پلیز. جناب علی مل گیا سر. Yes. My Lord Justice Shah has got this. Everybody got it. No, I haven't. You're only concerned with Shah Sahab. میں اس کا جواب ابھی نہیں دے سکتا. گزارش ہے جب بھی آپ جواب دیں پھر ہمیں بھی بتا دیں. ٹھیک ہے. گزارش ہے کہ بحکم سینٹرل گورنمنٹ مقدمہ عنوان بالا کی تفتیش ایف آئی اے لاہور کر رہی ہے اور مقدمہ داخل دفتر عدم پتہ ہو چکا ہے. وہ تفتیش کر رہے ہیں, مقدمہ داخل دفتر ہو چکا ہے. بذریعہ درخواست حاضہ استدعا ہے کہ مقدمہ حاضہ کی رپورٹ عدم پتہ لفظ کاغذات بسلسلہ تفتیش مقدمہ محافظ سے حاصل کرنے کا حکم صادر فرمایا جائے. یہ محمد بوٹا انسپیکٹر صاحب ہیں, 8/7/1977 کو یہ لکھ رہے ہیں, اور اگر رائٹ سائڈ پہ دیکھیں وہ وصول کر رہے ہیں 8/7/77. 8/8 اس کی کیا اہمیت ہے؟ اس کی اہمیت یہ ہے کہ انویسٹیگیشن وہ شروع کر رہے ہیں 24/7 سے, ڈاکومنٹ لے رہے ہیں 8/8 کو. انویسٹیگیشن اس نے لاسٹ سمنی 95 کا ذکر کیا, 1/10/75. بالکل ویری رائٹ. اب یہ بات کلیئر ہو گئی کہ جناب انویسٹیگیشن ری انویسٹیگیشن شروع کر دی اور فائل جو ہے وہ بعد میں لی گئی اور اس میں کہا گیا کہ ریکارڈ حاصل کیا جا چکا ہے. اگر آپ اس کو دیکھیں نا جو ضمنی پہلی جو عبد الخالق لکھ رہا ہے وہ کہتا ہے کہ ریکارڈ تھانہ اچھرا سے حاصل کیا گیا ہے, اور حاصل کب ہو رہا ہے یہ ہوگی. اب آ گیا اگلا کوشچن کہ یہ ری انویسٹیگیشن کیسے ہوئی. یہ question is a very important question as put by my Lord Mr. Justice Mother and even Justice Halali. There is no application on the record. I will repeat it. There is no application on the record to the magistrate for reopening the reinvestigation for his permission or any application to the higher forum of the magistrate for setting aside the order. There is no application. So patently illegal. Number next, sir. Certainly if there was some order
for reinvestigation, obviously it would be under the some provision of law, under section so and so, such and such act, this investigation is transferred from the police and entrusted to the FIA. But sir, if your lordship have a look at the FIA Act, I think it was passed in 1975, if I'm not 1970. There is no provision. There is no provision in that act that any investigation from any agency can be transferred and entrusted to the FIA. There is no provision. And there is nothing on the record what provision of law was invoked for this particular purpose. Don't you think they were investigating the officials of FSF, which led to this? No, so, but as far as the investigation of those officials in FSF, that was competent. But you say that after that they could not have. If your lordship kindly read the first Zimni, they say that when we were investigating the affairs of FSF, we came to know that they might be involved in this case, and we informed our officer, and they transferred this investigation. So under what law they transferred? Besides the point whether they went to the magistrate or not, because this is the most important point, why they did not go to the magistrate, but we ignored it for the time being. Even if we ignore this fact that the magistrate approved the police report and closed the case, but they wanted to reinvestigate, okay, they can, suppose they can. Who was competent to order for reinvestigation? And if competent, under what provision of law? This is my point. What provision of law order will be passed? As your lordship knows it very well, under the NAB ordinance there is a provision for transfer of investigation from local police to the NAB authorities. But there is no provision. ठीक है, अब समझ गए. Next point. जनाब, ठीक है सर, आगे तो चलें. अब मैं इस पे वो PW 41 को रेफर करना चाहता हूँ, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं पढ़ रहा सर, उसका थोड़ा सा बयान पढ़ रहा हूँ, जिसमें उसने इन्वेस्टिगेशन के बारे में कहा है, दैट विल बी द आंसर टू द क्वेरी ऑफ माय लॉर्ड जस्टिस या कि जी उसने क्या कहा. ये वॉल्यूम है 4. अब देखिए ना, डॉक्यूमेंट कोई एक वॉल्यूम में, कोई दूसरे वॉल्यूम में पढ़ते नहीं, आपने माशाल्लाह बड़ा मेहनत की है. बताऊं, मैंने नहीं किया सर. क्रेडिट गोज टू दीज टू जेंटलमैन who are standing behind me. This all has been done, 90% credit to these two gentlemen. I have not done anything. Volume 4, page sir 690. PW 41. Even sir, I'm addressing my Lord Justice Yaya, even the order for investigation in the affair of FSF was verbal. जी, वॉल्यूम 4 आ गई हाथ में, आप बताइए. जी सर, पेज 690. 690. ये टाइप पेज है. ये टाइप पेज, ये तो एविडेंस का पेज है ना जी. अच्छा, ये एविडेंस का पेज है. 690 जनाब. यहाँ से ये क्रॉस एग्जामिनेशन शुरू हो रहा है ना जी. मिल गया है? नहीं मिली. मिल गया सर, बाकियों का भी मिल जाए तो अगर इजाजत दें तो. जी मिल गया. चलिए सर, वो नहीं, वो मुझसे ज्यादा जवान है, वो इनको जल्दी मिल जाएगा. ये फरमाइए. जी सर. जी सर, ये क्रॉस एग्जामिनेशन है और इसमें ये पॉइंट नोट कर लें कि ये जो वकील साहब हैं जो क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहे हैं, इरशाद अहमद कुरैशी साहब हैं. ये भुट्टो साहब के वकील नहीं हैं, ये उनके वकील हैं जिन्होंने कन्फेशन किया हुआ है. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. जिन 3 मुल्ज़मान ने no, those who have been hanged, They were co-accused. They were hanged. All 3 persons whose names are mentioned, kindly see. Co-accused lawyer. Cross examination by Mr. Irshad Ahmed Qureshi, advocate. Falsufi Ghulam Mustafa, confessed, hang. Iftikhar, confessed, hang. Arshad Iqbal, confessed, hang. He is their counsel. Now kindly see the reply. The direction to conduct the inquiries
into the performance of FSF and its officer were conveyed to me by my director verbally. Sir, this is the position. Even that was not under some order, written order. Hey, was it a retracted confession? No, they remain stick to their confession. So then why is he cross-examining? But they were accused, but they said that we did confess their crime, but said we were compelled, we were under the circumstances. This confession was Retract हो गया ना? 164 confession. 164 ने पूरी तरह रिट्रैक्ट नहीं किया ना जी, कन्फेशन के साथ उसको जस्टिफाई करने। अब Mitigating. मैं अगर इस पे आ जाऊंगा मेरा ये कैसा बात? I am ready for you even for a month. No, I just अगर want to आप know problem- that when you use the word confession, it was a 164 statement? It was 164 statement, and even before In that 164 statements, did he name Mr. Bhutto or not? But they had nothing to do with Bhutto. They said we did under the direction of Mia Abbas and Ghulam Mustafa. So who they was another- did not mention. वो तो इस कन्फेशन में उनका जिक्र ही कोई नहीं है ना जी, वो रेलेवेंट भी नहीं है उनके लिए। So confessed. confessed their crime. No, I want to write it. Committed on the instructions. On the direction of Sufi, apna this Mia Muhammad Abbas and Ghulam Hussain. Mia Muhammad Abbas, who was he? he was Deputy Director FIA. Deputy Director FSF. And the other gentleman? Other gentleman was Ghulam Hussain. He too was from FSF, probably he was Inspector FSF, and he became approver. He's the second approver. सब इसकी चेन में थोड़ा सा अगर इजाजत दें तो क्लियर करूं केस क्या है प्रोसिक्यूशन का, ताकि ये थोड़ी सी आपको क्लैरिटी हो जाए। री इन्वेस्टिगेशन की हद तक तो क्लियर है कि ये वर्बल थी। नहीं सर, वो आगे एक और अगर एक और पढ़ लेना जी, एक और पेज तो और क्लियर होगी, वो भी पढ़ लें, फिर मैं आपको बताता हूँ कि प्रोसिक्यूशन का केस 2 मिनट में बता दूंगा। ठीक है, उसी पे ये पेज 693 पे जनाब अगर देख लें 693। 692 पे भी देखिएगा, उन्होंने लिखा है कि इन्वेस्टिगेशन जो है गवर्नमेंट के ऑर्डर पे री इन्वेस्टिगेशन हुई है। ये पेज 692 पे हाँ बिल्कुल कह रहे हैं, बट वेयर इज द ऑर्डर, वेयर इज द ऑर्डर? सच ऑर्डर इज सही है, वो अपना जो नहीं वो तो मैं कह रहा हूँ, मैंने तो खुद कहा। अब 693 पे आ गए, बताइए। 3 में क्या है ये जनाब के क्रॉस एग्जामिनेशन, ये फिर ये मियाँ अब्बास के वकील हैं कुर्बान सादिक इकराम साहब, हमारे जज भी रहे हैं, हाई कोर्ट के फौत हो गए हैं। अब ये जनाब जरा पढ़िए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। आई डिड नॉट कम अक्रॉस एनी रिटन ऑर्डर entrusting the investigation of this case to the FIA. अब ये उनका इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर सर कह रहे हैं कि I did not come across, but such an order must be in the office of the director FIA Lahore. The general inquiries into the performance of FSF and its officer were started by the FIA on or about 13/7/1977. No written order in this respect was given to me. I don't know the original authority from which the order to conduct the inquiry initially emanated, but I was ordered by my Director General verbally. ये है, अब इसको आप बायस कहेंगे, डिसऑनेस्टी कहेंगे, क्या कहेंगे? और ये बड़ी शॉकिंग चीज है। अब मैं आगे जाऊंगा ना तो फिर आप देखेंगे कि क्या हुआ। तो ये है। अब ये चीज, माय लॉर्ड, आई एम क्लियर नाउ। Now I am coming to a summary of the prosecution case, as my lord put. Sir, the prosecution case, in 2 minutes I will sum up this, is that there was a खत्म कर दें, एक सिर्फ बात है। In the meanwhile, any private complaint was also filed. Yes, sir. Well, I will deal that. I will deal that. अच्छा, you will come there. वो बड़ा लंबा है ना सर, ये बड़ा अच्छा, ठीक। बड़ी इसमें तलद्दुद करनी पड़ी। आपने नोट किया कि एक पेज जो एक फाइल में है, दूसरा दूसरी में है, तीसरा चौथी में है, उनको इकट्ठा करना, फिर बड़ा समराइज कीजिए। 15 साल के बाद मुझे ये काम करना पड़ा।
अब जनाब मैं ये गुजारिश कर रहा था कि ये समराइज मैं ये करता हूँ. We have to keep you entertained in your retirement, Manzoor Malik Sahab. I feel, sir, this is honor for me Ji. and this is my duty. I don't think anyone else could have done this, sir, this नहीं, job. बड़े बड़े लायक आदमी माशाल्लाह इत्तेज़ाज़ हसन साहब बैठे हैं, अज़हर रूहानी साहब बैठे हैं. मैं तो इसको ये ड्यूटी समझता हूँ सर. मैं अब एक बात करने लगा हूँ कि हमने प्रैक्टिस में जब भी ये केस साइट किया, इवन द मैजिस्ट्रेट सेड छोड़ो जी. Magistrate did not like to even read this order. And I still remember, sir, I was counsel in hijacking case at Karachi. I was counsel for one of the accused. And Batalvi Saab was very eminent lawyer. अब वो भी डिफेंस साइड पे थे, तो प्रोसिक्यूशन ने जब भी उन्हें एम्बैरस करना होता था, कोई बहस शुरू होती थी, तो वो ये जजमेंट दिखा लेते. एंड आई रिमेंबर द सिचुएशन 25 ईयर बैक. तो ये आपकी ड्यूटी है. मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा, मैं आपको बातें बता दूंगा उसको किस तरह डील करना है, इस इम्प्रेशन को कैसे ख़त्म करना है कि ये आगे आप जाएंगे तो इट विल बी मोर शॉकिंग. तो अब प्रोसिक्यूशन केस ये है कि देयर वाज ए कंस्पिरेसी sometimes before 74 between late Zulfikar Ali Bhutto and probably, if I'm not mistaken, Haq Nawaz Twana, who was Director General FSF, and Mia Muhammad Abbas, who was Deputy Director FSF, for assassination of The conspiracy section was incorporated in the charge or no? है चार्ज में तो है, सदा में भी है, चार्ज में भी, FIA में नहीं, FIR में नहीं. अब मैं सर इसको खत्म कर लूँ अगर इजाजत दे तो. जी. अब वो ये था कि जी देयर वाज ए कंस्पिरेसी बिटवीन लेट जुल्फिकार, उसका टाइम नहीं दिया गया, बट ऑब्वियसली दैट वाज आफ्टर द क्रिएशन ऑफ FSF एंड बिफोर मसूद महमूद became the Director General of FSF. Haq Nawaz Twana, Zulfikar Ali Bhutto and Mia Muhammad Abbas. There were three. Conspiracy was to assassinate Ahmad Raza Kasuri Saab, who with grace of Allah is still alive. May Allah give him long life. And Haq Nawaz Twana retired and Masood Mahmood was appointed as Director General FSF. That I will deal separately. And then he was introduced in this conspiracy. Masood Mahmood was introduced in this conspiracy. Then Masood Mahmood, late Zulfikar Ali Bhutto and Mia Abbas ordered this Ghulam Hussain to execute this conspiracy. The task was assigned to Ghulam Hussain. Ghulam Hussain arranged Sufi Ghulam Mustafa, from whom they received Sten gun and other weapon, etc. And he also arranged Arshad Iqbal and Iftikhar. These two persons, along with Ghulam Hussain, they were present at the spot. This is prosecution story. And Ghulam Hussain was watching the whole operation. He was controlling the whole operation. And these two young men in their early 20s, they fired at the car. One is Sufi Ghulam Mustafa, the other is? Sufi Ghulam Mustafa is the person who was not present at the spot. His fault was that he provided the ammunition, weapon to these three persons. Ghulam Hussain, Iftikhar, तीसरा क्या है? Arshad. Iftikhar एक हो गया, दूसरा Arshad. और दूसरा अरशद है. Arshad. तीसरा गुलाम हुसैन. अब हुआ ये, अगर आप जनाब रिकॉल करें तो मैंने बताया कि जब फर्स्ट इंटरम चालान सबमिट किया गया तो इसमें सारे ही मुल्ज़म थे. वो जो थे मसूद महमूद साहब वो भी मुल्ज़म थे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी मुल्ज़म थे, और वो दूसरे ये 7 बंदे सारे ही मुल्ज़म थे. फिर Masood Mahmood became approver. His statement, first his confessional statement was recorded, where he confessed this, yes, I was part of this conspiracy. Whether or not this is a separate question, I will deal it later on. Thereafter, his statement was recorded when pardon was granted to him under Section 337 Code of Criminal Procedure, and he became approver. He was number one. And then Ghulam Hussain became the approver, who was head of this operation. So these two persons became approver. They were granted pardon.
then they appeared before the court as the witnesses. Those remaining 3, they remain stick to their confession. Pardon was granted by the By the provincial court. government or the federal No, government? sir, it is always granted by the magistrate. At that time, it was deputy commissioner or anybody authorized by the district magistrate. But at the relevant time, he was additional deputy commissioner. He granted. Sir, so your lordship is asking some question. जिस तरह मसूद महमूद का 164 का भी था और अप्रूवल भी था, वो तो इसी तरह गुलाम सैन का भी 164 का था, बिल्कुल था, बिल्कुल था। उसका भी था। पहले तो वो मुल्ज़म बने हैं ना, इसीलिए तो वो मुल्ज़म बने। पहले इंटरम चालान में वो मुल्ज़म इसीलिए बने ना ठीक है। कि उन्होंने, अब फिर बाद में वो अप्रूवर बन गए, Approval भी बन स्टेटस चेंज हो गया। अब ये था प्रोसिक्यूशन केस, इसमें जो अबेटमेंट के कंस्पिरेसी के मुल्ज़म थे उनको भी सजाए मौत, और जो एक्ट्रेस के थे उनको भी सजाए मौत। 5 पर्सन वर हैंग फॉर 1 इंजरी, 5%। जिस शख्स को जिसको कत्ल किया गया, इंटेंशन उसको कत्ल करने का नहीं था। सर ये तो ला है ना कि अगर इंटेंशन 301 आ ए को करने का है और बी हो गया तो वो वही समझा जाएगा कि ए ही हुआ है। 301 वो बहुत क्लियर है उसको, वो 301 क्लियर। अब चले सर, आगे चले जी। Whenever you are tired, let us know. We can No, take sir, a no, break. I am not. I'm not. I will just ask for a break for the prayer. Whenever you want, we'll break. Otherwise, no, sir. और 2 बजे, हाँ 2 बजे। 2 बजे करते हैं। Sir, Challan, this, now I'm talking of incomplete Challan, as your Lordship has said. I will show you the incomplete Challan. It was prepared on before that, no transfer. And if your Lordship permit me, may I deal with the transfer of this case? No, I think Challan ke baad hi hua hai. Incomplete Challan was prepared on 11th of September 1977. 11th of September, this reinvestigation started in July, and on 11th of September, incomplete Challan was prepared. And sir, it was submitted in the court of the learned magistrate on 12th of September 1977. Interim Challan is at page 282 of volume 7. हाँ, वॉल्यूम 7 जनाब देख लें। पेज सर 282 देखना है में ठीक है सर। सर वो आप देख लें कि ये इसमें 7 एक्यूज है ना, देखिए 7 मुल्ज़म है, बाद में कंप्लीट आया तो 5 रह गए। हाँ वो अगली बात है, बस ये सबमिट हो गया सर। अब ये सबमिट हो रहा है 12th of September 1977, and now the order is at page 3 to 4 of the same volume. Of the same volume. ये ज़रूरी है जी, ये जरा पढ़ लें। ये ज़रूर सर, ये बड़ा ज़रूरी है। कौन सा पेज? सर पेज 3 to 4 वॉल्यूम 7 जी जी पढ़िए। ये सर सरकार बनाम, ये उर्दू में है जी, बनाम जुल्फकार अली भुट्टो वगैरह, विद इन ब्रैकेट लिखा है 7 कस, ये 7 लोगों के खिलाफ चला। जेर दफा 302, 307, 120B, 109 ते पे ताज़ीरात पाकिस्तान। नामुकम्मल चलान मुकदमा हाजा आज अदालत पेश हुआ, मुल्ज़मान जुडिशल हवालात में हैं। चलान बाद पड़ताल दर्ज रजिस्टर होकर बअदालत जनाब सेशन जज लाहौर भिजवाया जाता है बराए मजीद कार्रवाई, क्योंकि जुर्म ज़ेर दफ़ा ते पे की समात की मुजाज सिर्फ अदालत सेशन है। नो सर, दिस इज आंसर ऑफ योर क्वेरी, सो दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू एग्जामिन एनीथिंग, दे विल सेंड टू द कोर्ट ऑफ सेशन। इसमें क्या खास बात है? खास मैं ये कर रहा हूँ कि ये 12 तारीख को उसने भेज दिया सेशन कोर्ट को। फिर सर मैं आगे चलता हूँ। अच्छा 190 और रिसीव भी हो गया सेशन, रिसीव भी सेम डेट में होगा। उसी डेट को ये सेशन कोर्ट को रिसीव होगा, उसी पेज पे
उसी पे ठीक है सर कुछ नहीं अगर इजाजत दे नहीं मैं जरा आपको थोड़ा सा पुश भी कर रहा हूँ नहीं पुश अच्छा ठीक जी बड़ा जरूरी है 12 तारीख को ये चालान सेशन कोर्ट चला गया अब दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ द लर्नड सेशन जज व्हिच आई हैव नॉट सीन एनीवेयर एल्स received today PP to check and report by 14th of instant अब पीपी से पब्लिक प्रोसिक्यूटर ये वो जज साहब थे देन ही वाज जज ऑफ दिस ऑनरेबल कोर्ट एज वेल ही वाज एट दैट टाइम एंड ही इज अलाइव नाउ सेशन जज ये सेशन जज कौन एजाज निसार साहब हमारे अच्छा एजाज निसार साहब सेशन जज लाहौर थे आज भी माशाल्लाह जिंदा हैं अल्लाह उनको जिंदगी दे ये उनका ऑर्डर है अब उसी दिन अब अगली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट उसके बाद उनने कोई ऑर्डर किया इसने सेशन जज साहब वो मौका ही नहीं मिला वो क्या उन्होंने तो एक ऑर्डर किया ना जी उन्होंने पीपी को भेज दिया उन्होंने पीपी से कहा कि आप रिपोर्ट करें एग्जामिन करके ठीक इट्स नॉट रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ ठीक है so PP has nothing to do with that is so he did not exercise his judicial mind on the nothing and PP submitted report of what happened next that is more important पीपी से सिर्फ असिस्टेंस मांग रहे थे वो बहरहाल उनको समझा के चलें कुछ बता दें क्या बट मुझे नहीं पता मैं कमेंट नहीं फर्दर करता इस पे अब उसी दिन अब ये यहाँ इंपॉर्टेंट बात आ रही है उसी दिन 12 तारीख है और नेक्स्ट डे पे ये केस हाई कोर्ट ट्रांसफर हो जाता है इस तरह होता है ये दिखाएं ये रिकॉर्ड से दिखाएं एक सेकंड सर एक सेकंड अब मैं जनाब योर लॉर्डशिप इज हाईली रिस्पेक्टेबल फॉर मी बट आई एम I think you are breaking all the ratings of all the TV channels today. क्यों सर Sensational. Suspense. वो बात ही You created suspense. नहीं नॉट सस्पेंस सर जी. योर लॉर्डशिप We are waiting for the next thing you say. जी. Volume 7 page 1 sir Volume 7. page 1 Same volume. same volume and I will write to read the caption of this application the title we call the state versus Mr. Z.A. Bhutto etc. So it's very important. Yesterday some lawyer told that said perhaps the application was filed by Kasuri Saab. This application has been filed by the state etc. Order है 13/9/1977. In my whole career, sir, as a lawyer, as a judge, I have not seen such a brief order. Which order is this? This one, this just few lines order. जरा पढ़ लें इसको. मैं पढ़ता हूँ. अब देखिए, मिस्टर अनवर, मैसेज अनवर, M.A. रहमान, Ijaz Hussain Batalvi and Farouk Bedar advocate all for the prosecution. In view of the submissions made in the petition, the case is transferred to this court for trial. In view of the submissions, what are those submissions? Nobody knows. Where is the petition? No, it is not on the record. Any notice to the other side? No. ये तो अगली बात है जी पहले तो इसको हजम करें ना जनाब कि ये हुआ क्या है ये बड़ी पेनफुल सिचुएशन आप इतने मुरगन ग़िज़ा ना खिलाए क्या मज़म ना नहीं आप करेंगे मैं कहता हूँ ये तो सर बड़ी बातें हैं ना जी अभी तो और बातें इतनी ज्यादा आएंगी तो बहुत मुश्किल हो इसी जाएगा मौके पे जरा वो प्रोविजन भी बता दीजिए 526 अभी हम पढ़ लेते हैं सर वो बाद में पढ़ेंगे पहले मैं एक और बात बता दूं वो मैंने पढ़नी है उसके साथ तो बहुत बड़ी बहस है इस इशू पे ठीक मलिक साहब इसके ऊपर जो नंबर लिखा है 127T ट्रांसफर ये एप्लीकेशन ट्रांसफर सर टी फॉर और एप्लीकेशन नहीं है नहीं एप्लीकेशन है ना जी एप्लीकेशन रिकॉर्ड पे नहीं है नहीं कोर्ट पे नहीं है होगी नंबर लगा हुआ है। जरा इसमें इस पेज पे सफा नंबर 2 पे 2 नंबर हैं एक है क्रिमिनल ओरिजिनल 60-77 सर वो ये नहीं है वो अब ऑर्डर आ गए हैं ट्रायल कोर्ट के जो हाई कोर्ट ट्रायल कोर्ट बन गई है ना ये ऑर्डर उसके हैं ये ट्रांसफर एप्लीकेशन से सिर्फ यही रिलेट करता है वो उसके नहीं है ये बेसिकली जो स्टाफ ऑफिस है ना आपका उसने एक्टिंग चीफ जस्टिस साहब कौन है मौलवी मुश्ताक हुसैन साहब ये सर ये अगला है इसको कंफ्यूज ना करें इसके साथ ये अगली बात है इस ट्रांसफर एप्लीकेशन पे यही ऑर्डर है
नहीं, ट्रांसफर एप्लीकेशन को नंबर तो लगा हुआ है 127T, बिल्कुल लगा है ना जी, उसी का ऑर्डर है ना, लेकिन वो कॉपी कहीं नहीं है। वो कॉपी है ही नहीं। और अगली बात मैं बताता हूँ ना जी, एक तो ये आपने नोट कर लिया कि द स्टेट हैज मेड जुल्फकार अली भुट्टो एंड अदर एज रिस्पोंडेंट, दे वर रिस्पोंडेंट, बट नो नोटिस, no notice. And the more interesting point is that this application could not be filed before 12th when the challan was submitted. Before that it could not be filed. Malik Sahib, this order was Sorry, pending this before, point, sorry. before any higher forum? Madam, I have not been able to get hold of any petition before the Supreme Court, but it is for likes up whether there was a challenge or not. I think it was not. But then there was a petition filed by late Zulfikar Ali Bhutto before the High Court wherein this issue was raised, and that order is very interesting which has been passed. But these are, whatever I am saying is undisputed. Undisputed that this is the order, no ground, no contention, and no conclusion, and no notice. No notice. In spite of the fact that they were respondent, and the state was conscious, prosecution was conscious that they people are relevant, so This they was the were. responsibility of the court. Yes, of course it is a responsibility of the court. And when just I was submitting, sir, that before 12th this application could not be filed because under section 526 only a case pending before the court can be transferred. ये पॉसिबल है 13 को ही फाइल हुई हो जब और ये बिल्कुल मुझे नहीं, आई एम सॉरी, मैंने तो जरा सेफ साइड पे रहा हूँ। नहीं तो ये कहाँ पे पेंडिंग था जो यहाँ पे ट्रांसफर हो गया? ये मैजिस्ट्रेट के पास पेंडिंग था ना जी, मैजिस्ट्रेट से चला गया सेशन जज के पास उसी दिन। 12 को चालान सबमिट हुआ, 12 को मैजिस्ट्रेट ने 190 सबसेक्शन 2 उसके तहत उसने सेशन जज को भेजा, और सेशन जज ने उस पर एक ऑर्डर किया, अपने पीपी से कहा कि रिपोर्ट दो। अभी वो रिपोर्ट आई या नहीं आई, वो रिपोर्ट वैसे पड़ी है फाइल पे, मगर वो पिटीशन होगी हाई कोर्ट को। माय लॉर्ड हैज वेरी राइटली पॉइंटेड आउट कि दिस माइट हैव बीन फाइल्ड ऑन 13th, बट एट द मोस्ट if we give allowance to the prosecution, it could not be filed before 12th of September, because before 12th of September nothing was pending in any court. And then I will read 526, that too is very relevant, you can transfer a case from a court, you cannot transfer investigation to the court. So no notice. आप कहते हैं कि सेशन जज ने कॉग्निजेंस अभी तक नहीं लिया, केस उनके पास नहीं था। नहीं, उनके पास तो था, चला गया ना जी, कॉग्निजेंस की कंडीशन नहीं है, वो मकसद ये फ्रॉम ए कोर्ट ऑब्वियसली। और आगे वो भी मलिक साहब ये जो है कि इट शैल बी हर्ड बाय द फुल बेंच। अब ये तो जनाब आप देखेंगे कि क्या ये suo moto transfer है। No, sir, please. This is not suo moto. There was a petition. Trial will be conducted. But when there is no petition on the record, But sir, then we can only assume it's suo moto. no, because number is there. So if by all fairness, since I am here to assist this court, I will But not say. who is the petitioner? Petitioner is a state, sir, prosecution. See, why would you assume it's the petitioner? Why not the complainant? नहीं, वो Why नाम not नहीं है the ना जी। accused? Why not anybody else? सर पे ऊपर पड़े ना, the state versus so and so, या पढ़ा ना इसका टाइटल। But it may be because every criminal case is the state versus. Yes. So I don't know. They don't even mention who the petitioner is. No, sir, no. The state is a petitioner because in every criminal case it is the state, because state is responsible for your life, liberty, property, etc., etc. State is the custodian. So as in England, the prosecutor is the crown. Yeah, I'm just taking a charitable view of the matter. If it was suo moto, maybe the court could have done, I don't know. But if it was a state, then notice was absolutely essential to the accused and the complainant. सर मैं Maybe the complainant didn't want to उस पे transfer. आऊंगा कि उसका जवाब जो दिया है ना हाई कोर्ट ने, अब मैं इतने पेन में आ गया उसको पढ़ के कि जब उन्होंने कहा कि हमें नोटिस देने की जरूरत ही नहीं है।
अच्छा, they admit it. Yes, वो मैं Any application is available on record? तो सर नो No application. पता नहीं अब बाकी लोगों की क्या राय है। नहीं, अगर आप ये बात अभी भी कर दें, ये जो आपने कहा जो हाई कोर्ट में जो सर मैं करूंगा, मगर मुझे जरा चलने दें, मैंने बड़ी मेहनत की है, मुझे बड़ी सालों के बाद we appreciate that. मैं चाहता हूं कि मैं आगे उस वक्त चलूं जब आप तमाम लोग जो हैं वो क्लैरिटी में आ जाएं कि जो मैं कह रहा हूं मैं कह सका हूं और मैं समझा भी सका हूं। अब मैं क्योंकि डिफरेंट है ना जी, मैं जल्दी नहीं समझता, जनाब बहुत क्विक हैं, आप जल्दी समझते हैं, मेरा प्रॉब्लम है, तो मेरे साथ वाले भी होंगे। तो ये अच्छा थोड़ा सा आपको ये अंदाजा होगा मलिक साहब, थोड़ा सा अंदाजा जब आप यहाँ थे और वहाँ वकील की क्या हालत होती होगी, अच्छा आपका अंदाजा? नहीं कोई वैसी बात नहीं, बट आई एम वेरी कंफर्टेबल सर, वेरी कंफर्टेबल, कोई ऐसा मसला नहीं है। मैं तो आई विल वेलकम योर क्वेश्चंस, आई विल वेलकम योर क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन। चार्ज का नहीं No, I think, सर ये चार्ज तो अगली स्टेज आनी है ना, अभी तो चार्ज कहाँ से आ गया, अभी तो केस आया है। वो जो आपने ट्रांसफर के बाद जो डेट पड़ी है हाई कोर्ट की, उन्होंने डायरेक्ट एविडेंस के लिए रखा है। सर वो मैं आऊंगा ना जी, उस पे मैं आऊंगा। चलें, let us not नहीं करें सर, कोई बात। अच्छा अब ये मैं सबमिशन ये करूंगा कि इससे पहले कि मैं इस पे अपनी सबमिशंस करूं इस पॉइंट पे कि क्या हुआ, ट्रांसफर एप्लीकेशन कैसे होती है, क्या नहीं हो सकता, वो भुट्टो साहब की जो एप्लीकेशन कौन से पेज पे है, ये फर्स्ट कोई रेफर कर लेना बेटा, वॉल्यूम 10 है सर, वॉल्यूम 10। ये मौलवी मुश्ताक साहब क्या सेशन जज से एलिवेट हुए थे या लॉयर से? नहीं सर लॉयर थे and he was elevated in 1960. He was acting. Who was the chief justice? सर वो मार्शल लॉ के बाद एक्टिंग का उन्होंने ओथ लिया पहले, फिर उन्होंने परमानेंट का भी लिया, वो भी मैं अगर इजाजत। कौन सी वॉल्यूम? ये अभी मैं रेफर कर रहा हूँ वॉल्यूम 10 को, वॉल्यूम 10 सर। वॉल्यूम किशमिश पेज कौन सा, ये पिटीशन है नहीं, पेज कौन सा है? अच्छा पेज 19 पिटीशन का, अच्छा पेज 19 सर, वॉल्यूम 10 सर, 19 सर। अब क्योंकि मैंने कहा ना कि मैं, आपने कहा कि यही बता दें उन्होंने क्या इसका ऑर्डर लिखा है, मैं इसलिए इसको सर पेज 19 वॉल्यूम 10 मिल गया सर? मिल गया, मिल रहा है जी। बाकी सब सर्विस पूरी तरह नहीं है सब जगह। ऑन बिहाफ ऑफ जी सर, ये एप्लीकेशन है क्रिमिनल ओरिजिनल, ये ऊपर है नंबर, मिसलेनियस नंबर, ये क्रिमिनल मिसलेनियस है 933 M of 1977. Sir, this was filed on 5/10/77. So important is this was before framing of the charge. This was before framing of the charge. So this is in re the state versus the complainant, Mr. Zulfikar Ali Bhutto accused. It is on behalf of Mr. Zulfikar Ali Bhutto accused in the above mentioned case. It is respectfully submitted. ये पहला पैरा मैं छोड़ देता हूँ. This is political. मैं जनाब को अगले पेज पे ले जाता हूँ. ये पेज 2 पे सर, जिसपे वो बायस की बात उन्होंने की है, पढ़ूं सर? पेज 2 ग्राउंड 3, पेज 2 इस पिटीशन का, जी पढ़िए। Page 2, ground 3, the apprehension of the petitioner about the partiality and prejudice of Mr. Justice Mushtaq Hussain is further enhanced by his order transferring the above captioned case from the lower court to the high court on the day the petitioner was enlarged on bail. Mr. Justice K.M. Samdani, before a complete challan was even submitted to the subordinate court concerned. ये उन्होंने ये ग्राउंड ली है. अब ये एक्टिंग चीफ अगला है 4, that against the order passed Mr. Justice Mushtaq Hussain as acting chief justice constituting a special bench of 5 judges presided over by him for the trial of the challan case when the private complaint, अब वो जिक्र आ गया जनाब का, my lord Justice Tariq Masood was asking. 5 judges presided over by him for the trial of the challan case when the private complaint with regard to the same matter was being inquired into by a division bench of the High Court caused grave apprehension about getting a fair trial.
It is submitted that on that date even complete challan has not been filed, but yet 24 September was fixed for hearing of the case. That the withdrawal of the challan case from the lower court without hearing the petitioner, now he is agitating, without hearing the petitioner has caused prejudice to him and deprived him of his right of appeal revision to the High Court. تو سے یہ اعتراض جو پوچھ رہے تھے جناب پچھلی ڈیٹوں پہ، یہ اعتراض ہوا اور اس کا آرڈر بھی ہوا. اب وہ آرڈر دیکھ لیتے ہیں. ملا حیدر؟ نہیں مل رہا؟ کہاں سے؟ پارٹ کون سا ہے؟ پارٹ 9 ہے. اچھا سر، یہ آپ کا اب پارٹ 9 ہے والیوم کی بجائے. کسی جگہ پہ یہ پارٹ ہے، کسی جگہ پہ والیوم ہے. جی یہ مل گیا ہے سب کو؟ جی مل گیا. جی سر پیج اس کا 35 ہے، یہاں سے یہ آرڈر شروع ہو رہا ہے. جی یہ اس کا آرڈر تو بڑا لمبا ہے، میں اس کو سکپ کروں گا. 55 پہ کون سا ہے؟ 40. اچھا جناب، اس سے پہلے ذرا میں پیرا پڑھ دوں. پیرا 14 جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم سب نے پی سی او کا اوتھ اٹھایا ہے، سپریم کورٹ سے پی سی او کا اوتھ اٹھایا ہے. یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. اسی آرڈر کا؟ ہاں اسی آرڈر میں لکھا ہے ایٹ پیج 43 سر، پیج 43 پیرا 14. بفور یو کم ٹو اٹ، یہ اگر آپ ٹائٹل دیکھیے پیج 35 پہ، اس میں 2 اپلیکیشنز کا دو ہیں، دوسری بھی ہے. دوسری کون سی ہے؟ 933 تو وہ والی ہے، 933 میں انہوں نے وہ ریکیوزل والی ہے. ہاں وہ کوئی. اور دوسری والی کون سی ہے؟ یہ ایک تو یہ ہے نا جس میں انہوں نے ان کا پریجوڈس اور بائس. دوسری کون سی؟ دوسری میں کیا ایشو تھا؟ ہاں وہ تھا کہ ایکٹنگ چیف جسٹس جو ہے وہ ہائی کورٹ کو وہ نہیں کنٹرول کر سکتا، دس شوڈ بی پرماننٹ چیف جسٹس. مگر وہ کوئی اتنی امپورٹنٹ نہیں. یہ اس ریفرنس سے یہ ٹرانسفر کے، میں اس لیے اس کو اسکپ کر رہا ہوں. مگر یہ بڑا انٹرسٹنگ پیرا ہے جو میں پڑھنا چاہتا ہوں. جی پڑھیے. پیج بتائیں. جی پیج 43 سر، پارٹ میلوٹ پارٹ 9. وہ ایک سے ادھر آ رہا ہے، آ رہا ہے، آ رہا ہے. بڑا اسکیٹرڈ ہوا ہے سر. کوئی ادھر آرڈر ہے، کوئی جب تک پڑھتے ہیں باقی جناب. جی نہیں، وہ آپ پڑھیں گے تو ہم سن لیں گے، نہ بھی آئے. یہ سب کے پاس ہے. بسم جی جی پلیز اسٹارٹ. سب کے پاس نہیں پڑھتے تو ہم سنتے رہتے ہیں نا جب تک آ جائے گی. I have no objection, sir. آپ صحیح پڑھیں گے. I will obey every command of the نہیں جی Lordship. پلیز. Sir, the next challenge is to the oath subscribed to by the acting Chief Justice at the time of assumption of his office. The only objection is that the acting Chief Justice did not subscribe to the oath as required under Article 194 of the Constitution. This objection cannot be sustained in view of the High Court Judge's Oath of Office Order 1977 within bracket President's Order Post Proclamation number so and so. The oath of office prescribed therein is administered to the acting Chief Justice under Clause 5 of the High Court Appointment of Acting Chief Justice Order 77. A similar oath is required to be administered to all the judges of the Supreme Court. By virtue of Supreme Court Oath Order 77 enforced on the 22nd of September 77, all the judges of Supreme Court, including His Lordship Chief Justice, have already subscribed to such an oath. The argument of learned counsel, if allowed to prevail, will be chaotic for the administration of justice in the country, since it will lead to the result that there is no superior court in Pakistan. It's a very good explanation for taking oath under PCO. But there was no. But probably the judges realized that there was no superior court in Pakistan. نہیں وہ پتہ نہیں اب کیا کہتے ہیں. مجھے تو ان کا یہی سمجھ آیا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اوتھ نہ لیا تو جج ہی کوئی نہیں، کورٹ ہی کوئی نہ ہو. بڑی بات ہے ویسے. بہرحال اینی ویز اب دوسرا دکھاؤ. دوسرا پیج 55.
نہیں مگر میرٹس پہ بتائیں. میں اسی پہ آ رہا ہوں سر. یہ تو میں نے صرف آپ کو بتایا. آپ نے کہا تھا کہ وہ دوسری اپلیکیشن کیا ہے. اٹس اے گڈ ہسٹری لیسن بہت اچھا. اف نتھنگ ایلس. اب جناب ملک صاحب یہ بتائیں کہ یہ ہائی کورٹ نے کون سی جوریسڈکشن ایکسرسائز کی کس کیس میں اسی میں ٹرانسفر جی سر 526 ابھی تو میں پڑھنا ہے اس کو ابھی کیونکہ میں وہ آئی ایم اوبیئنگ دا ڈائریکشن وہ میں اس کو پڑھوں گا. ساتھ ہی پھر یہ بھی بتا دیں بعد میں کوشچن کرنے سے اسٹیٹ مسٹ بی تھرو somebody. اسٹیٹ کا مطلب سر یہی ہوتا ہے کہ جیسے ہم بیل پٹیشن فائل کرتے ہیں نا ہم اپیل فائل کرتے ہیں somebody is convicted so that is ABC versus state. نہیں وہ نہیں وہ لکھیں نہ لکھیں اتنا ہے بعض جگہوں پہ شاید ہے ایسا بٹ وہ اسٹیٹ کا مطلب ہی یہی ہے کہ وہ پروسیکیوشن ہے. وہ کوئی اتنا سیریس بات نہیں. اب میں 35 دو نہیں اب آپ میرٹ والی بات بتائیں. وہ میرٹ والی بات کیسے ڈیل کر رہے ہیں. چلنا میرٹ پہ اب اس میں سر پرائیویٹ کمپلینٹ کا بھی ذکر آ جائے گا. نوٹس کیوں نہیں ہوا وہ بھی آ جائے گا تاکہ دونوں چیزیں جو آپ نے پوچھی ہیں وہ کلیئر ہو جائیں گی. سر پیج 55 سر پارٹ 9 کے جی پارٹ ہے جی 9 جی 55 پیج پہ. جی 55 پیج پہ پیرا سر اس کا ہے 31. جی ایک کمپلینٹ ٹیشو دینا. ایک کمپلینٹ اگینسٹ 55 against Mr. Z. Bhutto and 19 other accused persons under section 120B 119. نہیں skip this. ہاں جی سر یہ بڑا ضروری ہے سر. یہ تھوڑا پلیز اس کو دیکھ لیجئے بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ میں نے تو پڑھ لیا جی. کچھ خاص بات ہے تو بتائیں سر. اگر اجازت دے تو میں پڑھ دوں تو پھر بتا دوں تو زیادہ سن لیں سر. کچھ نہیں ہوتا سر بڑا ضروری ہے. I'm in a very difficult position of trying to get things completed also. یہ بس نہیں ہو جائے گا سر. دیکھیے وہ اس سے بہتر ہے کہ وہ اگر میں ڈیو رسپیکٹ میں کہوں گا کہ اگر جلدی میں کوئی چیز رہ گئی تو پھر وہ ساری زندگی کا مسئلہ ہے. جیسے تو آپ اس کو سن لیں. میں تیار ہوں. آپ رات 12 بجے تک مجھے رکھیں میں تیار ہوں. اچھا میں 12 بجے تک بھی بحث کرنے کے لیے تیار ہوں. مجھے کوئی ایشو نہیں. ایک کمپلینٹ سر میں پڑھا تھا انڈر سیکشن میں سکپ کر دیتا ہوں. واز فائلڈ بفور اے مجسٹریٹ ایٹ لاہور بائی مسٹر افتخار احمد طاری دا کمپلینٹ اگینسٹ ایپلنٹ سو اینڈ سو. اب میں اس میں وہ آ جاتا ہوں جو کمپلینٹ انہوں نے کی ہے. میاں احمد طاری یہ کون آ گیا؟ یہ کوئی دوسرے تھے جی. یہ بیٹا یہ ہے دا کمپلینٹ آف احمد رضا قصوری پیرا 32. کرنا کیا چاہتے ہیں جی بڑا کرنا. واز ریفرڈ ٹو اے ڈویژن بینچ کنسسٹنگ آف مسٹر کے ایم سمدانی جے اینڈ مظہر الحق جے. اب یہاں میں پاس کروں گا اور میں سبمٹ کروں گا کہ وائی نوٹ this was not issued to the accused. Had it been issued, they could say, sir, if you want to transfer this case, so send it to the case where the complaint regarding the same incident is pending. So that was avoided because those two honorable judges, I believe the acting Chief Justice was not inclined to include them in the bench. So that is, اب اس کو آپ کیا کہیں گے؟ باعث کہیں گے، ٹیکٹ کہیں گے، کلیورنس کہیں گے. آپ کیا کہیں گے؟ میں کچھ نہیں کہوں گا. اب آپ اس کو کچھ کہتے ہیں آپ. سو میں کہتا ہوں دس از اے کلیور موو. جی سر ٹھیک ہے. یہ کلیور چیز ہے نا جی. یہ باعث سے آگے بات ہے. باعث تو ایک چیز ہے نا
आपका एक एक्ट है कुछ स्किप कर गए, ये तो आप किस तरह कर रहे हैं? आप कह रहे हैं वायलेशन ऑफ ड्यू प्रोसेस है। वायलेशन भी नहीं है, वायलेशन तो बड़ी चीजें होती हैं कि मुझे कॉपी चाहिए, मुझे नहीं मिली, मुझे ये होना चाहिए था, नहीं हुआ, ये वायलेशन नहीं है कि एक goes to the root of a fair trial. हाँ बिल्कुल, ये आपने एक clever, yeah, because I can now read the mind of the judge as well. कि वो अगर नोटिस किया गया, so obviously the accused side will argue कि sir, the private complaint is pending before a two-member bench. Refer this two-member bench, and in that two-member bench, one has already allowed bail to Mr. Zulfikar Ali Bhutto. वो कंप्लेंट क्यों 2 मेंबर बेंच के पास अब पता नहीं वो उस वक्त चली गई होगी, पता नहीं चला होगा, यहाँ कोई बात अभी तक सही नहीं हुई होगी, मैं उस पर कुछ तबसरा नहीं करता, मैं तो वो बातें कर रहा हूँ जो फैक्ट है। उसमें एक जज ने बेल दे दी ना, नहीं, ये कंप्लेंट मैजिस्ट्रेट के पास नहीं जाती, वहीं थी ना जी पेंडिंग। नहीं, ये तो हाई कोर्ट के सर वो ट्रांसफर होगी ना। नो, अभी ट्रांसफर नहीं हुई जी। नहीं सर, हो गई है। आप ऐसा करिए कि 56 पेज के ऊपर से चौथी लाइन पढ़िए, अभी क्लियर हो जाएगा कि वो कंप्लेंट जो अहमद कसूरी इन्होंने दायर की थी वो कहाँ गई। ये पढ़े, सिमिलरली एक कंप्लेंट, हाँ वही है। हाँ ये पढ़े यहाँ से। हाँ मैं सर वो जल्दी में आता हूँ ना, तो फिर मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाती है। कंप्लेंट के अभी क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है आपने, मैंने सारा पढ़ना था, मुझे डायरेक्शन आ जाती है। हाँ पढ़े। सिमिलरली ये सर चौथी लाइन पैरा 56 से, सिमिलरली ए कंप्लेंट केस फाइल्ड बाय अहमद रजा कसूरी इन रिगार्ड टू द मर्डर ऑफ हिज फादर नवाब मोहम्मद अहमद खान वाज ट्रांसफर्ड दिस कोर्ट by order dated 15th of August 1977। पहले ही हो गई थी ये पहले, ये तो मैं कह रहा हूँ कंप्लेंट पहले ट्रांसफर हो चुकी है ना। इसीलिए जो मैंने जो आर्गुमेंट जनाब को दिया कि मूव क्या थी, करना क्या था, क्योंकि उस टू मेंबर बेंच में से वन ऑनरेबल जज जस्टिस समदानी अलाउड बेल टू जुल्फिकार अली भुट्टो इन द स्टेट केस कंप्लेंट। आप कहना ये चाह रहे हैं कि पहला उनका मूव ये था कि हम ये कंप्लेंट आए मैजिस्ट्रेट से हाई कोर्ट आ जाए, आ गई। ड्यूरिंग दैट प्रोसेस उनको बेल मिल गई, जब बेल मिल गई दे सेड ओके लेट्स ट्राई अनदर थिंग। उनने फिर एक और मूव किया और उनने जो मेन केस था उसको ट्रांसफर किया नोटिस के बगैर। नोटिस के बाद, ठीक समझ आ गई ना जी बात, वेरी क्लियर। और ये भी बता दें क्या क्या मैजिस्ट्रेट से वहाँ हाई कोर्ट ट्रांसफर हो सकता था, ये भी आपने। अब ये हो, बिल्कुल हो सकता है सर। अब उसमें लेकिन एक बात और क्लियर भी हो गई ना जी सर, कि एटलीस्ट ट्रायल कोर्ट के नोटिस में था कि एक कंप्लेंट यहाँ पड़ी है और नूरलाई केस के तहत उसको साथ चलना चाहिए। नहीं मगर सर वो तो देखे ना, अब मैजिस्ट्रेट तो ये ऑर्डर नहीं कर सकता ना कि इसको ट्रांसफर कर दें हाई कोर्ट के पास। नहीं, हाई कोर्ट के पास है ना जी, मगर वो दूसरा चालान जब आया मैजिस्ट्रेट के पास, उसके पास तो ही हैड नो ऑप्शन एक्सेप्ट टू सेंड इट टू द कोर्ट ऑफ सेशन। वो तो अंडर द लॉ ही कैन नॉट लुक एट दिस कंप्लेंट। अब माय लॉर्ड जस्टिस Yahya हैज वेरी एप्टली समराइज्ड द सिचुएशन, एंड आई थिंक ही इज fully understood कि what was the move, though it was clever move. What was the intention? No, since your lordship is looking for malice, yes, for touching the merits of the case, so step by step your lordship will feel that malice is not clear, but it is floating on the surface of the record.
in every respect. ट्रांसफर हुई थी विदाउट नोटिस, कंप्लेंट भी विदाउट नोटिस. कंप्लेंट तो सर कंप्लेंट में तो क्योंकि कंप्लेंट में उस वक्त तक एक्यूज हैज नॉट बीन समन्ड, उसमें तो वो अभी 202 की इंक्वायरी नहीं हुई ना, तो वो तो था ही कोई नहीं. वो हो गई, अगस्त में ट्रांसफर हो गई, उसमें मेन कॉग्निजेंस लेने से पहले ट्रांसफर हो गई. जी कॉग्निजेंस तो नहीं ली ना जी, उन्होंने तो अभी कुछ भी नहीं किया. मगर वो अब उसको अगर आप इंटरप्रेट करेंगे 526 को अभी पढ़ेंगे हम, क्योंकि उसमें तो और बहुत बातें करनी है. इस पॉइंट पे बहुत आर्गुमेंट्स है. ये केस ट्रांसफर हो ही नहीं सकता. फर्स्ट स्टेप में तो मजिस्ट्रेट ने सेशन जज को भिजवाना था, वहां से फिर हाई कोर्ट जाना था स्टेप. हाँ जी, तो अभी उसी के पास थी ना वो कंप्लेंट, उसमें बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं. बहरहाल ये रिकॉर्ड यही कह रहा है इंक्वायरी के बाद फिर आगे कहानी होगी. वो कंप्लेंट जो है रिकॉर्ड पे नहीं है कसूरी साहब वाली. वो मैंने लेटर भी लिखा था आपके ऑफिस को, उन्होंने मुझे कुछ 10 कॉपियां भेज दी, सारी एक एक सफ़ा देखा. वो कोई तारी साहब की कंप्लेंट है, कोई किसी और की कंप्लेंट है. जो कसूरी साहब ने फाइल की थी वो रिकॉर्ड पे नहीं है, और उस कंप्लेंट पे हाई कोर्ट के क्या ऑर्डर हुए वो भी रिकॉर्ड में. अब तो मेरे पास जो कुछ है मैं तो आपको उससे भी असिस्ट कर रहा हूं कि जनाब ये स्टेट ऑफ अफेयर है. इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये एक एक स्टेप जरूरी है, एक एक स्टेप जरूरी है. अगर जनाब चाहते हैं कि आपके सामने पिक्चर क्लियर हो जाए तो ये इसमें बहुत जरूरी है कि इस चीजों को देखा जाए. सर अब मैं पढ़ूं सर. By the order of so and so, another complaint, Sayyid Zafar Hussain Shah versus Zulfikar Ali Bhutto, ये भी कोई और है, इसको मैं छोड़ देता हूँ. The complaint of Ahmed Raza Kasuri was referred to a division bench during the pendency of this complaint. Now this is relevant, sir. Para 33. The police filed an incomplete challan before a magistrate on 11th of September. ये 12th को है, उन्होंने 11th लिख दिया. The magistrate acting under section 193 of Code of Criminal Procedure, हालांकि एक्ट उसने 190 में किया, ये जज साहब ने 193 लिख दिया. The same day to the Court of Session, the state filed an application for transfer of this case to the original site of the High Court, which came up for hearing on the morning of 13th of September 1977. The acting Chief Justice passed an order of transfer and constituted a larger bench of 5 judges for hearing the matter, obviously on the same ground on which number of other cases against Mr. Bhutto and other has been transferred. अब वो कौन सी ground है? We don't know. Nothing is on the record. उन्होंने कहा कि वो भी हुए थे तो ये भी कर दी. अब जनाब इसका 34 का मैं पढ़ूंगा, क्या पूरा तो मैं नहीं पढ़ा, मैं ऊपर से 7-8 लाइनें छोड़ के नीचे जहां पे 10:30 AM लिखा है ना जी, एक लाइन में 10:30 AM, मैं इससे आगे पढ़ूंगा. There is nothing singular or strange in the order of transfer which was considered expedient in the interest of justice, as Mr. Bhutto, who had held some highest office in the country, was an accused. In view of the importance of trial, the constitution of a larger bench of 5 judges was considered necessary. The constitution of such a bench should inspire more confidence. अब ये मुल्ज़म को भी ये एडवाइस दी जा रही है कि 5 जजों पे इत्मीनान ज़्यादा करो. To the more confidence rather than create an apprehension in the mind of any property. The apprehension of the petitioner's partiality and prejudice of acting Chief Justice on this ground is not at all reasonable. And another ground, ये कहाँ है वो जो ट्रांसफर हो गया, वो पढ़ देना. हाँ ये सर, अब मैं सर बाकी अभी स्किप कर रहा हूँ. पेज 63 जिसमें ये ट्रांसफर के बारे में बात आ रही है. पेज 63 सर, पैरा 42. बड़ा ही इंटरेस्टिंग है सर, बड़ा इंटरेस्टिंग है और बड़ा पेनफुल है, बड़ा पेनफुल है पर्सनली फॉर मी सर. An other ground is that the order of transfer has been passed without notice to the accused petitioner. No such notice was required in the present case. अब आप ये बता दें, मैं नहीं, I can't comprehend sir, कि 5 judges of the High Court headed by the Chief Justice, who by that time was judge for the last 15 years, they are writing no notice was required. और इससे पेनफुल बात अगली है. Under section 526,
6. Provide for a notice to the public prosecutor on the application of accused person for transfer of a criminal case. अब जनाब यहाँ पे मैं ज़रा 526 का 6 पढ़ दूंगा ताकि जनाब को पता चले फिर कि क्या हुआ है जनाब. आप वो जो कर रहे हैं ना कि मूव क्या मूव है, अब यहाँ से क्लियर होती है. ये जनाब 526 सब सेक्शन 6 सर पढ़ू सर जी. Notice to public prosecutor of application under this section. Every accused person making any such application shall give to the public prosecutor notice in writing of the application together with a copy of grounds on which it is made, and no order shall be made on the merits of the application unless at least 24 hours have elapsed between giving of notice and hearing of application. इस नोटिस को उन्होंने बना दिया. अब जरा देखें अब इसको जनाब क्या कहेंगे. Ignorance. If it is ignorance. Ignorance of all the 5 judges. No. नहीं क्या कह रहे हैं कि नोटिस सिर्फ प्रोसिक्यूटर को होगा. प्रोसिक्यूटर को नोटिस है एक्यूज की तरफ से. जिस तरह जनाब की कोर्ट में है कि जब आप चैलेंज करते हैं तो वो एक कॉपी भेजते हैं ना. अब इससे बड़ी आई डोंट वांट टू यूज दिस वर्ड बट बदयांती क्या होगी. What is mentioned if the state applies for the transfer? If the state applies for yes, वो कहते हैं जरूरत नहीं है. क्यों? नोटिस तो ये तो कोर्ट से रिलेटेड ही नहीं है, ये तो एक्यूज से रिलेटेड है कि अगर वो करेगा तो वो नोटिस देगा. वो कहते हैं क्योंकि स्टेट को नोटिस होना जरूरी है, एक्यूज को नोटिस. मलिक साहब ये तो आप इस पे आ गए ना, मगर ग्राउंड्स ऑफ ट्रांसफर जो हैं वो कहाँ है? वो 526 में दिए गए 1 2 3 4 5. सर मैं आऊंगा तो उनका तो तस्करा है ही मैं नहीं. आऊंगा. मैं तो आपको देखे मैं तो इसीलिए कह रहा था कि ये जो चीज है ये टाइम कंज्यूमिंग है बट जरूरी बड़ी है. ये स्टेप बाय स्टेप. Whether for this presidential reference or Yes, not, but good history lesson. Yes sir, बिल्कुल And है. for students of law. बिल्कुल है. मैं कहता as हूँ well as for judges. मैं कहता हूँ कि इसको कंपल्सरी कर दिया. I taught this case at slums for 4 months. For 4 months. मैं तो कहता हूँ इसको कंपल्सरी कर दें कि ये जो भी क्रिमिनल साइड पे प्रैक्टिस करना चाहता है या जिसको भी आप एलिवेट करें वो ये केस पढ़ के आए. वैसे मैं ये सवाल पूछता था अक्सर वो जब मैं ASCs को एनरोल कर रहा था, खास तौर से जो क्रिमिनल केसेस करते हैं कि आपने जजमेंट पढ़ा है ये वाला, और शायद ही किसी ने पढ़ा होता था. नहीं वो किसी सर केस को एक और मैं रिक्वेस्ट करूं यहाँ पे. केस अगर आपने क्रिमिनल केस को समझना है तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की जज से आप जजमेंट से कुछ नहीं पता चलेगा, बिकॉज दैट इज द कंक्लूजन. आप रिकॉर्ड देखें, आप एविडेंस देखें, वहां से समझ आती है. अब ये अगर इंटरप्रिटेशन है कि वो कहते हैं कि अगर ये इंटरप्रिटेशन मान ली जाए. अब मैं आ गया जी, आगे बढ़ें सर. आगे सब सेक्शन 3 of section 526 read with clause E of section 526(1) authorize the High Court to transfer to it a case either on the application of a party or on its own initiative whenever it is expedient in the interest of justice. These provisions authorize the High Court pass an order without notice. अब इसका क्या करें? तो फिर ये सब कहने की जरूरत भी नहीं थी क्योंकि ट्रांसफर तो केस ऑलरेडी हो चुका है. वो कहने की जरूरत इसलिए थी कि आपके पास एप्लीकेशन आ गई. वो तो एप्लीकेशन 22 पे आ रही है. नहीं इस पे आ रही है ना जी. 2 दरखास्तें मैंने पढ़ी पहले आपको, उसमें ये स्पेसिफिक ग्राउंड है की जानिब से. नहीं सर नहीं, मैं थोड़ा सा केस ट्रांसफर हो गया, उसने एतराज किया without notice to the accused, not 1 but 5 accused. At that time there were 7 accused. Then when it was in the High Court, when this was in the High Court, an application was filed in the High Court. नहीं मैं जरा सा कंफ्यूज हूँ. वो जो ऑर्डर आपने जो सबसे पहले पढ़ा था, जरा उस ऑर्डर पे वापस आइए 1 सेकंड के लिए. एक नंबर पेज पे जी, वो 1 नंबर पेज जी फरमाइए सर. मैं मेरे जुबानी याद है, आप पूछिए.
is transferred to this court. Yes. जरा से मैं टेक्निकल बात कर रहा हूँ. Is transferred to this court for trial. Now the same bench is hearing that it has been wrongly transferred. एक ये पॉइंट है, वो जो एप्लीकेशन में जो थ्रस्ट ऑफ द मैटर है ऑन द प्रेजुडिस और बायस ऑफ द एक्टिंग चीफ जस्टिस, ये तो ऑर्डर हो चुका है सर. इसी तो फिर ये वो इतना लंबा ऑर्डर, अब वो एक्चुअली क्या कर रहे हैं, अब वो उसको जस्टिफाई कर रहे हैं. अनलेस आई एम रॉन्ग. बिल्कुल ठीक, बिल्कुल 100% ठीक है. आप हुआ ये कि टेंटेटिव ऑर्डर नहीं है ये, देखें सब्जेक्ट टू नोटिस लिखा है, इज ट्रांसफर टू दिस केयर फॉर ट्रायल, फुल स्टॉप, खत्म हो गई. नहीं, but that was a short order. It says for short order we giving reasons now. Page 35 पे देखें ना. सर नहीं, वो दूसरा. देखिए मंजूर मलिक साहब, go back to page 2. Page 35 says so. नहीं सर नहीं, I'm talking about the order on page 2 in view of the submissions made by Volume. ये तो conclusive order आ गया. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. मैं सर मैं आज करता हूँ. Then he turns it around, says for the short order passed earlier. It's not a short. He's saying that, man. From where you are reading, sir? Sir, page 35. Volume? Part 9. जरा देखिए ना, उन्हीं एप्लीकेशंस पे फिर ऑर्डर आ रहा है ना. नहीं, ये वो एप्लीकेशन नहीं है सर, वो एप्लीकेशन है 127T of which have already been dismissed by a short order. वो तो और है ना, यही सीएम है ना, पहले डिसमिस, यही सीएम है, नीचे इनका शॉर्ट ऑर्डर के नीचे ऑर्डर. साहब मैं शायद अपनी वजाहत नहीं कर सका. मैं अगर आपको पेज नंबर 2 पे हम जाएं वापस, जो है in view of the submissions made in the petition, the case is transferred to this court for trial. Full stop. Concluded matter. Now, in the subsequent order, they're justifying this order. वो इसलिए जस्टिफाई कर रहे हैं, मैं Which was strange. सर वो इसलिए कर रहे हैं कि जो एक्यूज की तरफ से ये जो मिसलिनियस एप्लीकेशन लिखी है ये भुट्टो साहब ने ये डिफरेंट है. भी कवर कर रहे हैं. अब वो क्यों कर रहे हैं? उसको डिसमिस किया हम दोनों एप्लीकेशन को शॉर्ट ऑर्डर. मेरा मतलब ये है कि टेक्निकली स्पीकिंग, इफ इट इज टू बी ट्रीटेड एज एन अपील, इट शुड हैव बीन बिफोर सम अदर बेंच. फिर ठीक है, क्योंकि ये खुद ही फिर उसको रीजनिंग दे रहे हैं. सर वो इसलिए कर रहे हैं ना कि भुट्टो साहब prayer was that this court shall not hear this matter. He was alleging bias, and for alleging bias, this was one of the ground of bias. But against one judge. One judge was obviously, sir. मगर उन्होंने उसको जस्टिफाई करने में बहुत सी चीजें कर दी. सर वो हाथी के पाँव में सबका पाँव, वो तो फिर जब एक आप चीफ जस्टिस को करेंगे तो बाकी तो शामिल हो ही जाएंगे ना. वो तो सारे शामिल हो जाएंगे उसमें. वो मैं जो बात कर रहा हूँ, आप कोई इंसिनुएशन तो नहीं कर रहे हैं? क्या आप कोई इंसिनुएशन तो नहीं कर रहे हैं इधर? ये तो मुहावरा है जी, जो समझना चाहे मुझे. मैं तो नहीं कह रहा, ये तो जिसने मुहावरा हमारी अदालत बड़ी डेमोक्रेटिक है. हर जज अपने डिसेंट भी करते हैं, आप नोट कर रहे होंगे. ये तो बड़ा हेल्दी साइन है ना जी. डिसेंट करना का मतलब है कि यू आर अलाइव. आप एक जो जिंदा है वही डिसेंड करेगा ना. जो डिसेंट करते हैं वो हाथी के पाँव से निकल जाता है. जो डिसेंट करते हैं वो हाथी के पाँव से निकल जाता है. अब आप मैं नहीं ज्यादा लिबर्टी नहीं लेना चाहता. अच्छा सर, वुड यू लाइक टू टेक अ ब्रेक एट दिस पॉइंट? कर ले जी, कर ले. नहीं, क्योंकि आप काफी देर से खड़े हुए हैं. सर मेरे नहीं हमें है फिक्र. कोई कर लेते सर, आप बता. मेरा ख्याल है इस पॉइंट को खत्म कर लें. ये जो ट्रांसफर वाला, चले ये खत्म, चले बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक. आई एम विद यू सर, आई एम विद यू. ये खत्म कर लें. नो सर, नाउ आई विल लाइक टू रीड सेक्शन 526. दिस इज द पॉइंट. I hope I am clear on the change of investigation, re-investigation, transfer of the case, no notice to the accused, no notice to anybody, then justification that notice is not required. So I am clear. Now sir, as your lordship has rightly observed that this provision has not authorized the High Court to transfer any case without any justification. There must be some reason. There are grounds which have been mentioned in this section. Okay, under such and such ground, a case can be transferred to the High Court. And those grounds are question of law of unusual difficulty, general convenience of the party,
such order is expedient in the end of justice. आपने पहला वाला छोड़ दिया. वो भी सब कर ले, उसको भी शामिल कर ले. मेरा मैं जिस पॉइंट पे जल्दी Fair and impartial inquiry or trial cannot be had in any criminal court. ये बिल्कुल ठीक है सर, वो आप काफी चीजें उसमें. अगर ये लिखना तो चाहिए जजेस को. सर मैं तो कहता हूँ लिखना चाहिए नहीं, ये तो this is the mockery of law if you pass an order just by saying in view of the submission made in the application it is transferred, and that too by a 5-member bench headed by the Chief Justice, and in a case where death sentence is provided. So, but anyway, this is the reality you people are facing now. This is the reason why people say this is a judicial murder. This is the reason. These are the grounds. अब जनाब इसका मैं पढ़ूंगा सब सेक्शन 2. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है सर, बड़ा इंपॉर्टेंट है. When the High Court withdraws for trial before itself any case from any court, it shall observe in such trial the same procedure which that court would have observed if the case has not been withdrawn. It's a very important, sir. Ab, your Lordship have noted that High Court has power to transfer a case from magistrate to the Court of Session, from the Court of Session to another Court of Session, but this provision is not for that court. This is for the High Court. If High Court withdraws a case from any court to it, it will follow the same procedure which is prescribed by that court. Court of Session का procedure. Session या magistrate का. अगर आपने magistrate से किया है, so you will follow the procedure of the magistrate. This is very important. Now I will draw your attention, your Lordship, to section 374. Kindly see. What is 374? यही जो है कि confirm कौन करेगा death penalty. नहीं सर, मैं अब आता हूँ, बड़ा ही it is a novel point. High Court 5-member bench उसको death penalty दे रही है, तो confirmation क्या Supreme Court करेगी? 374, 376. सर मैं सर इजाजत दें मुझे. Section 374 Code of Criminal Procedure, इसका कैप्शन है सर, sentence of death to be submitted by the Court of Session. When the Court of Session passes sentence of death, the proceedings shall be submitted to the High Court and the sentence shall not be executed unless it is confirmed by the High Court. आगे सर वो procedure सारा दिया, वो क्या करेगी High Court. अब now this provision is part of procedure of Court of Session. Your Lordship has gone through many judgments. Every judgment of a session judge or additional session judge, at the end it is mentioned that reference is being sent to the High Court under the provision of so and so. This is part of procedure. So the question arises, if this case, a case where sentence is death is provided, is transferred to the High Court, where this provision will go. Then the number of questions, related questions arise. बिल्कुल arise होते हैं. One, firstly, yes, sir. Are you saying that under 526, no murder trial can take place? That could be number one. No murder trial can be transferred to the High Court. Ek second, let me just finish. One interpretation could be, because if you read the two sections together, since confirmation is required and there is a possibility of a capital punishment being given, therefore High Court should never transfer to itself a murder case. That could be one interpretation. The second interpretation could be, no, you can still transfer it, but then the High Court is not actually acting as a High Court, but it is actually acting as a Sessions Court, and then the matter will have to go to another bench of the High Court, exercising powers under the High Court. Very right, very right. I mean, I don't know. Or since the third one could be, since this has been done under the 526, this is a redundant provision. These, I think, are the only three scenarios. Very precisely. अब आपका, what is your answer? मेरे दोनों ही हैं. एक क्वेश्चन यहाँ पर, क्योंकि इसको करेक्ट करने के लिए, it is not a transfer of the trial, it is withdrawal of the trial. सेम ही ठीक है जी. No, transfer is something else. नहीं सर नहीं, एक ही वो आप पढ़े ना जी. इसको आप अटेंड कर लें पहले. ना withdrawal
विड्रॉल है, एक मामला एक कोर्ट में पेंडिंग है, आपने अपने पास ले लिया, वो किसी की एप्लीकेशन पे लिया या ऑन योर ओन इनिशिएटिव, वो एक ही चीज है, विड्रॉल और ट्रांसफर। मतलब ये है कि हाई कोर्ट में जाग चला गया ना जी। अब ये अग्रीड के आपके प्रोसीजर ख्याल में अब ये चौथा सिनारियो वो लार्जर बेंच का है, आप हमें ये जरा मैं करता हूँ, मैं जरा यू आर गेटिंग डिट्रैक्टेड। नहीं जी सर, आप क्या प्रोसीजर ऑफ यस, प्रोसीजर तो वही रहेगा ना। सेशन ट्रायल, मैं यही कह रहा हूँ ना कि सेक्शन 374 इज पार्ट ऑफ द प्रोसीजर एंड देन देयर इज अ वेरी गुड जजमेंट ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ दिस सेक्शन ऑथर बाय माय लॉर्ड मिस्टर जस्टिस मंसूर अली शाह। Thank you, sir. I am just reading that. You're only concerned today with Shah Sahab. This is PLD 2021. नहीं, पहले ये आप हमें बताएं ना। क्या सर, ये सुनने में बताता हूँ वो बात, आपकी बात मैंने नोट कर ली है, मैं उसका जवाब देता हूँ, मगर ये थोड़ा सा जो PLD सर 2021 सुप्रीम कोर्ट 600 रेलेवेंट यही है। अब इसका पैरा 6 है जी, फिर 7, 8 दे आर रेलेवेंट। आपका जजमेंट है? नहीं, मेरा नहीं, शाह साहब का है। आप शाह साहब इज द ऑथर जज सर। आप सिग्नेटरी थे इसमें? हाँ, ये बात ये सही है, बट आई डिड नॉट ऑथर। Which paragraph? सर पैरा 6 से अगर कहते मैं पढ़ देता हूँ, नहीं तो आप खुद पढ़ लीजिएगा। नहीं, सिर्फ बता दें क्या ये पैरा 6 है, ये इन्होंने कहा कि ये एक ड्यूटी है, ये और ये ड्यूटी उससे बड़ी है। अपील जो है वो राइट है, दिस इज द ड्यूटी। एंड फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस एज ए जज ऑफ द हाई कोर्ट, sir, I decided 2 murder references where there was no appeal. No, kindly look at the wisdom. There was no appeal. 2 cases. I decided as the judge of the High Court with perhaps my Lord Justice Tarak was with me or somebody else, I don't remember. But in both these cases, both the accused were acquitted. Both the accused. So this is the duty. That is a right. And it is clearly mentioned that if this reference has been sent, that sentence cannot be executed unless references. There is no bar if no appeal has been filed. अपील के लिए नहीं है, ये रेफरेंस के लिए। Now coming to that point, कि first interpretation, my interpretation, that if we read these 2 provisions together, so I will submit that this a case where death sentence is provided cannot be transferred to the High Court because of 374, because otherwise it will become redundant. अगर उसको प्रोविजन तो अप्लाई भी नहीं हो गया ना, वो कौन सी सर? हाँ, वो भी है, एक वो भी पॉसिबल। सर अब 5 मेंबर बेंच सुन रहा है तो उसका 10 मेंबर बेंच रेफरेंस 9 मेंबर के पास दाखिल हो जाता है। ये एक रिलेटेड क्वेश्चन इन पाकिस्तान जुडिशियल हिस्ट्री, has a murder trial ever been conducted by the High Court? बिल्कुल बिल्कुल सर, इसमें murder trial, मैं यही अर्ज करने लगा उसकी, जो हमने रिसर्च किया, मैंने नहीं की, क्रेडिट गोज टू दीज 2 यंग बैरिस्टर्स। इंडियन जुरिस्डिक्शन में एक भी केस नहीं है, ठीक है, हाँ छोड़ो, इंडियन जुरिस्डिक्शन में नहीं है, एक भी केस नहीं है सिंस 47 टिल 1970, हमने 77 तक देखा ताकि वो पीरियड रहा। पाकिस्तान में 2 केसेस हैं, दो। एक केस है कराची का, दैट वाज अगेंस्ट गोहर अयूब, son of former President Ayub. Some private complaint was filed. I think that was in connection with the election of 64. कराची इंसिडेंट था कोई, वो उसके कंप्लेनेंट ने फाइल की कि जनाब मुझे यहाँ से इंसाफ नहीं मिलेगा, तो गौहर अयूब ने भी कर दी, दोनों ने कर दी। दैट केस वाज ट्रांसफर्ड। मर्डर केस था, ये मर्डर केस था, कंप्लेंट थी अभी वो। दैट मैटर वेंट टू द हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने वो जो कंप्लेंट केस वाला था उसकी पिटीशन खारिज कर दी, और दूसरी उन्होंने कहा कि ठीक है, ये अभी कॉग्निजेंस उसने इंक्वायरी नहीं की थी उसमें, वो जजमेंट हम दे रहे हैं जनाब, वो खुद देख लीजिएगा। रिपोर्टेड है, अनरिपोर्टेड नहीं, रिपोर्टेड है जी। साइटेशन दे दें, बताइए जी, मुझे दे दो। 1968 पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जर्नल, ये कराची है ना,
16775 167. और ये सुप्रीम कोर्ट में क्या गई 675 नहीं 1675 सर 1675. वेरी राइट सर 1675 इसमें क्या था कि you can do it. हाँ जी It can be transferred. यस उन्होंने ये बात नहीं की कि इस इशू को नहीं डिस्कस किया कि 374 अच्छा, okay. तो ये आप खाली बता रहे हैं कि ऐसा केस हुआ था नहीं ये हुआ और उसमें दोनों पार्टी ने कहा मगर अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने सेटिसाइड करके कहा मैजिस्ट्रेट इसमें कंफर्मेशन की बात का क्या हुआ कौन सी कन्फर्म वो फैसला ही नहीं दिया अभी तो ट्रांसफर हुआ अच्छा, ठीक है, उस ट्रायल की वो तो फिर वापस हो गया ये सुप्रीम कोर्ट में चला गया PLD 1965 सुप्रीम कोर्ट पेज 496 सुप्रीम कोर्ट ने जो कंप्लेन 1965 कैसे 68 का तो हाई कोर्ट का केस है सर वो 65 में नहीं, अब आप क्या कह रहे हैं? रिपोर्ट लेट हुआ ये रिपोर्ट लेट हुआ रिपोर्ट PLD कब की PLD PLD है सर 1965 ये रिपोर्ट लेट हो गया वापस भेज दिया वो वापस भेज दिया पेज सुप्रीम कोर्ट पेज 496 ये रीजंस क्या दी थी मलिक साहब वापस भेजने की सर वो रीजन इसका मैडम ये है कि उन्होंने कहा कि ये क्योंकि मजिस्ट्रेट ने अभी तक उस पर कुछ किया ही नहीं है अभी तो इंक्वायरी नहीं की तो कैसे ट्रांसफर होगा प्रेसिडेंट नहीं है कुछ नहीं और दूसरा केस ट्रायल की और कोई कुछ नहीं एक और है जी वो है केस वो जो साबिक गवर्नर थे अमीर मोहम्मद खान उनका केस भी ट्रांसफर हुआ था हाई कोर्ट में मगर वो भी दोनों की रिक्वेस्ट पे हुआ था कंप्लेनेंट भी और दूसरा भी उसका ट्रायल हुआ नहीं हुआ ये कुछ नहीं मुझे पता क्योंकि मैंने अपने तौर पर भी हाई कोर्ट से पता करने की कोशिश की तो कोई रिकॉर्ड नहीं मिला हमें बट वो बरी हो गया मेरा मगर उसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिला ट्रायल हाई कोर्ट में हुई थी हियरिंग दी केस और वो उसमें बरी हो गया असद Malik Asad was the accused. मगर साहब that is not a reported judgment इसलिए हमें नहीं मिली I don't think it was reported. It was not. But it was This question was not considered. No. self defense was taken. वो अब वो भी जजमेंट लिख लीजिए पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जर्नल कौन सी यार क्या करती हो पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जर्नल 1969 पेज 1058 1058 लाहौर का केस है जी ये अमीर मलिक यही वाला नहीं मलिक क्या नाम ने बताया मलिक असद ये वाला केस है असद का जी ये वैसे चौधरी साहब फरमा रहे हैं तो बिल्कुल ठीक ही फरमा रहे हैं मुझे भी ऐसा बताया गया कि वो बरी हो गया मगर मेरे पास जजमेंट नहीं थी तो इसलिए मैंने नहीं बताई बात क्योंकि मैंने कहा कि फिर वो डिफिकल्टी है बट एंड इसमें भी दोनों ने कहा कि ट्रांसफर कर दें और ये जो पॉइंट मैंने आज रेज किया 374 का दिस हैज नॉट बीन कंसिडर्ड इन एनी जजमेंट वो अगर कुट्टर लोग तो वैसे ही नहीं वो हो गया ना जी नहीं पहले भी दोनों ने कहा ना जी दोनों केसों में in our this jurisdiction should we expound on this or not कहाँ पे in this case No, not at all, not a touch even. आप देख रहे हैं मैं कहते हैं पढ़ देता हूँ नहीं हम आप जो jurisdiction इस्तेमाल कर रहे हैं advisory should we expound on section 526 read with 374 or should we not I say you must sir you are here to do complete justice not with the people but history as well or something ठीक है which has not been considered by any court before नहीं ये रेज कहाँ से कंसिडर होता जब आप नोटिस ही नहीं कर रहे Is this a good time to break now? मैं तैयार हूँ जी जब अभी कर ले नहीं मेरा मतलब कि आपका कोई सीक्वेंस नहीं तोड़ना चाहते हैं सब ये हो गया जी ये ट्रांसफर की हद तक मैं आई थिंक आई एम क्लियर 374 को भी आपने मीट कर लिया कि वो नहीं हो सकता और आपका ख्याल ये है कि सेशन ट्रायल जो है वो ट्रायल मर्डर केस जो है उसको ट्रायल पे नहीं नहीं मेरा ये हर केस जिसमें डेथ सेंटेंस है Yes. And the second, the interpretation I will adopt of my very good interpretation. Very good interpretation. I must appreciate. Finally. Thank you, sir. Thank